हेलो वेलकम टू एश टॉक्स फुटबॉल एंड वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। दोस्तों आई थिंक एक इशू आ रहा है इन स्ट्रीम यार्ड। लेट मी सी कि क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है, लेट मी सी कि क्या सीन है यहाँ पे। वेट होल्ड ऑन, इट इज तो एनीवन एंड आई थिंक पब्लिक ही है। मैं पता नहीं क्यों मुझे फीड नहीं आ रहा है फ्रॉम यूट्यूब। ये पब्लिक ही है स्ट्रीम। सो फैंटास्टिक वे, लाइक द स्ट्रीम गाइस एवरीवन एंड प्लीज 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 हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। आई डोंट नो कि क्या सीन है, पब्लिक ही तो है स्ट्रीम। आई डोंट नो इफ यू गाइस आर सीइंग एंड इफ यू गाइस आर सीइंग द चैट एज वेल। थोड़ा सा कुछ तो इशू आ रहा है, आई डोंट नो। 14 people watching right now, like the stream दोस्तों and please subscribe to the channel। यहाँ बोल रहे हैं कि not one player will come, write down the photos you provided। see, David Raum is a real possibility। by the way guys, I want to show you this। ठीक है, I wanted to show you this। Jed Spence, here we go। Jed Spence, here we go। Hey, good to see you, good to see you। Arjun is here, good to see you। okay, done, good to see you। यहां पे भाई जेड स्पेंस हियर वी गो आ चुका है दोस्तों। जेड स्पेंस हियर वी गो इज हियर। जेड स्पेंस हियर वी गो भाई, क्रेजी। जेड स्पेंस हियर वी गो इज हैपनिंग राइट नाउ। लाइक द स्ट्रीम, आई एम गोना शो यू गाइस। मैं पता नहीं कुछ तो इशू हो रहा है यूट्यूब पे। देयर इज सम इश्यूज, देयर इज सम डिले दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। That's some delay that is happening right now। hello Ash bhai, good to see you, good to see you। hello Ash bhai, what's up, good to see you। all good bhai। hello Ash bhai, how's your health? hope you're recovering well now। it's good yaar, it's getting better right now and the health is getting better। मेरी अब वो fractures मेरी मतलब वो जो bandage था ना वो हट गया है। so right now I'm going through like physiotherapy right now। फिजियोथेरेपी से हो रहा है right now at this point। तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आई थिंक it'll take a week or two, बट जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग के प्यार की वजह से ऑलरेडी 30 पीपल ज्वाइंड इन दोस्तों। स्पेंस टू इंटर इज डन दोस्तों। स्पेंस टू इंटर इज डन मेरे भाई। स्पेंस टू इंटर इज डन। मैं आप लोगों को दिखाता हूं भाई यहाँ पे। हियर वी गो आ चुका है एंड पीपल विल आस्क मी, ठीक है, एंड पीपल विल टेल मी कि ऐश भाई why did not we go for Spence। दोस्तों स्पेंस प्लेज प्राइमरीली राइट विंग बैक खेलता है यार। आई नो ही कैन प्ले लेफ्ट विंग बैक, बट वी हैव द सेम इशू भाई। वी हैव द सेम इशू। मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूं, डू नॉट गो विद दिस डील की वाई यूनाइटेड डिड नॉट गो फॉर इट। यूनाइटेड को एक लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक चाहिए। वी डू नॉट वांट अनदर डियोगो डालो सिचुएशन दोस्तों। बट ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, जेड स्पेंस हियर वी गो आ चुका है टू इंटर एंड प्राइस इज वेरी चीप भाई। 31.5 मिलियन भाई, 31.5 मिलियन में हो चुका है। लाइक द स्ट्रीम दोस्तों। बट थैंक यू सो मच अनुज फॉर आस्किंग इट। 42 पीपल watching the stream right now, like the stream। why we missed out on Spence? We were never in for Spence मेरे भाई, and we should not have never been for Spence। we already have Mazraoui, we already have Dallo, ठीक है। जेड स्पेंस की इंजरी हिस्ट्री भी थोड़ी ऊपर नीचे है। आई नो उसका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा, टैलेंटेड प्लेयर है, बट इफ वी आर थिंकिंग यूनाइटेड फैंस की नहीं, जेड स्पेंस को लेफ्ट विंग बैक जैसा साइन करना चाहिए, नो, that's the wrong way to think about it। यूनाइटेड कुछ करने वाला नहीं है। व्हाट अ शिट विंडो फॉर यूनाइटेड। यू नो आई वाज चेकिंग वन मोर थिंग। मैं आपको और एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूं दोस्तों, लेकिन प्लीज लाइक द स्ट्रीम दोस्तों। निंजा गेमिंग इज हियर, गुड टू सी यू। मुझे ये क्लब का कुछ समझ नहीं आ रहा। नथिंग कॉन्क्रीट साइनिंग रूमर, दिमाग खराब हो गया। यस, इतनी न्यूज। कल इंडी काइला बोलता है वॉर्टन के लिए जा रही है यूनाइटेड, ठीक है। बहुत सारे न्यूज आउटलेट से आ रही है वॉर्टन जा रही है यूनाइटेड। नाउ Liverpool are absolutely in for Wharton। Liverpool have made the calls for Wharton। United ने calls मारी नहीं होगी। तो यहाँ बहुत सारा चीज चल रहा है दोस्तों, एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी। मुझे लग रहा है कि ये क्या बकचोदी चल रहा है इन मैन यूनाइटेड राइट नाउ। एक साइनिंग नहीं हो रही है, एक प्लेयर के लिए यूनाइटेड जा नहीं रही है सही से, एंड आई एम जस्ट वंडरिंग एंड थिंकिंग राइट नाउ, एंड I'm thinking to myself right now that is this all the window that it's gonna be right now। Jed Spence हो चुका है। 31.5 million is a steal deal दोस्तों, steal। Ash भाई क्या हाल? should I say हॉल तो आ नहीं रहा है भाई। हॉल by the way, हॉल का सिचुएशन ये है कि is training alone with an injury and we have seen this story before दोस्तों। हेलो Ash भाई, good to see you। तन्मय, हॉल टू मैन यूनाइटेड 10 करो भाई। 10 नहीं होगा, हॉल टू मैन यूनाइटेड 10 नहीं होगा भाई दोस्तों। आर यू फुल टाइम यूट्यूबर? नो, आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, आई एम अ पार्ट टाइम यूट्यूबर। मैं काम भी करता हूँ, उसके साथ ये भी करता हूँ। फ्रटेसी टू लाजियो हो रहा है, दिस स्पीड्स अप कर्टिस टू इंटर। आई थिंक कर्टिस आई थिंक डेफिनेटली हो जाएगा। कर्टिस टू इंटर इज हैपनिंग। स्पेंस ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। शशि भाई लिंक मांग रहे हैं। यस, लेट मी सेंड यू भाई, लेट मी सेंड यू।
लेट मी सेंड यू सचिव, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। व्हाट्सएप किधर है? व्हाट्सएप किधर है? रुको। Keep on liking the stream, दोस्तों. Keep on liking the stream. Cash flow, while Liverpool didn't go for him, they need a right back option. Of course they need a right back option. मैं बार बार कह चुका हूँ, Liverpool definitely need a right back. अगर नहीं है तो they have to still play with आपके फ्रिम्पोंग एंड आपके ब्रैडली जो इंजर्ड होते रहते हैं दोस्तों. How are you, Ash भाई? You are feeling better now? Saw the post on Insta regarding the bus accident. Take care man. Thank you so much. Yes, I'm better, a lot better भाई, a lot better. अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मेरा बैंडेज हट चुका है. I'm going through like occupational therapy. धीरे धीरे ऐसे करके हाथ मूवमेंट्स हो रही है, बट इन अभी भी स्टिचेस नहीं खुली हुई हैं, काफी डीप वुंड्स हैं अभी भी, वो हील नहीं हुई है, तो उसको हील होने में टाइम लगेगा दोस्तों. बट लाइक द स्ट्रीम गाइस, लाइक द स्ट्रीम दोस्तों. ट्रांसफर ऑटोमीटर में भी ये चल रहा है, मैं लिंक भेजता हूँ शशि भाई को अभी एज वेल. ठीक है, एक मिनट. शशि भाई किधर है? ये लो लिंक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. यहाँ बोल रहे हैं कि एज भाई इंस्टेड ऑफ नथिंग स्पेंस फिर भी चला जाता है. आई डोंट नो व्हाई वी डिड नॉट साइन अ लेफ्ट बैक और नॉट. सी, जेड स्पेंस यूनाइटेड नहीं जाती, ना न जाना चाहिए था मेरे हिसाब से. आई नो थोड़ा फोमो हो रहा है. आई नो एक लग रहा है कि शायद यूनाइटेड अगर चली जाती उसके लिए एक सिचुएशन पैदा हो जाता कि हम लोग एक लेफ्ट बैक सिक्योर कर लेते. आई नो एंग्जाइटी हो रही है यहाँ पे, बट इट इज नॉट द साइनिंग वी नीड मेरे भाई. इट इज नॉट द साइनिंग वी नीड. मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, वी ऑलरेडी हैव मेड मिस्टेक्स ऑफ पुटिंग इन मेकशिफ्ट प्लेयर्स भाई. मेकशिफ्ट प्लेयर्स हमको लाने की बिल्कुल नहीं जरूरत है यहाँ पे. व्हाट्सअप ऐश भाई, होप योर भाभी डूइंग वेल. यस, वी आर डूइंग रियली रियली वेल. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पे शशि भाई जुड़ चुके हैं ऑन द स्ट्रीम, मैं उनको ऐड करता हूँ. शशि भाई व्हाट्सअप मेरे भाई, व्हाट्सअप, क्या हाल है? गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल? एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं ईयरफोन डाल देता हूँ. हेलो हेलो, आप बताओ एक बार. ऑल गुड ऑल गुड. आवाज आ रही है? रुको रुको एक मिनट. मेरे ईयरफोन खराब हो चुके हैं. हाँ हाँ शशि भाई, यस. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, एकदम परफेक्ट. ये वीडियो आपने डिसेबल किया है? क्या सीन है इसका? नहीं नहीं, वीडियो आपके यहाँ से नहीं आ रहा है. अरे हाँ, वीडियो आपके यहाँ से नहीं आ रहा है. यस, आपके यहाँ मैं से नहीं आ रहा है वीडियो. दोबारा ज्वाइन हाँ, करता आप हूँ. दोबारा ज्वाइन करो दोस्तों. हेलो हेलो, कॉपी निंजा इज हियर, गुड टू सी यू. हेलो भाई, कैसे हो? ऑल गुड यार, ऑल गुड. आई एम फीलिंग बेटर. आई एम गेटिंग बेटर एज वेल. डू यू नो रैशफोर्ड इज ऑफिशियली क्लब लेजेंड? यू कैन चेक. I mean, he's there in the club settings right now. I've accepted that Rashford will be part of the setting. I have accepted that Rashford will be part of the club setting right now, and all I want right now कि अच्छा सीजन हो, 15-20 गोल्स असिस्ट दे, एंड नेक्स्ट सीजन चला जाए in a good decent deal भाई. Julian Alvarez explained his stance to leave the club today to Diego Simeone, who instated that is a situation for the club to take care of that, and he's counting on him. Yes, क्लब ने ब्लॉक करने की कोशिश करी इस पूरी डील को. यस, दैट्स द करेक्ट न्यूज. एंड जूलियन एल्वारेज वांटेड टू लीव, लेकिन उसमें डियोगो सिमियोने वाज ओनली लिसनिंग टू द क्लब राइट नाउ. दैट्स इट. As for why didn't Liverpool go for him? They needed a right back option. I don't know. Maybe they don't need a right wing back option as well. शशि भाई को अभी ऐड करते हैं. यस, अभी आ रहा है. यस, कैसे हो मेरे भाई? व्हाट्सअप भाई? बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग. क्या हाल चाल आपके? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड. अभी बैंडेज रिमूव हो चुका है, सो अभी बस यहाँ पे अभी भी स्टिचेस लगी हुई हैं. सो बस अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है कि हाथ. हाँ, मेरा भी वही चल रहा है. मेरा भी ये फिंगर यहाँ पे आके लॉक हो जाता है फ्रैक्चर हाँ, के बाद. मेरा ये 2 लॉक हो गया है यहाँ पे. वही ग्रिप वाली थेरेपी चल रही है. हाँ, वो ग्रिप वाला चल रहा है हम लोगों दोस्तों. सो यहाँ बोल रहे हैं लाला इज योर फ्रॉड प्लेयर, फ्रॉड डील, चिल. किस बारे में बात कर रहे हो? वॉर्टन अगर लुइस हॉल की हॉल. बात कर रहा हूँ. लुइस हॉल. अच्छा, क्या क्या लग रहा है क्या वो? सी, सिचुएशन ये है शशि भाई, लुइस हॉल इज ट्रेनिंग अलोन, ठीक है. एंड लाला जो कह रहा है, लाला हैव सीन दिस बिफोर भाई. अलेक्जेंडर इसाक वाज ट्रेनिंग अलोन, ठीक है, फेकिंग पॉसिबली अ माइनर इंजरी. वो इंजर था नहीं. डू यू रिमोटली थिंक शशि भाई लुइस हॉल टू यूनाइटेड कहीं से भी हो रहा है? या यू थिंक ये लोग साले सलीना से ले आएंगे? और राइट नाउ आई एम आल्सो हियरिंग कि 16 मिलियन नहीं, 22.5 मिलियन उसका रिलीज क्लॉज है बाय द वे. बट यार, सलीनास पे एक न्यूज जो बहुत पहले आ गई थी कि दैट प्लेयर ओनली वांट्स बार्सिलोना. उसका बहुत क्लियर इंटेंशन है कि वो बारसा ही जाएगा. तो लाला 2-3 दिन से डेविड रॉम को कंसिडर कर रहा है यूनाइटेड के लिए, और वो वैलिड ऑप्शन भी है. उसमें बस मेरा ये कंसर्न है कि व्हाट इफ लूक शॉ लीव्स आफ्टर अ सीजन और 2, तब तक आपका डेविड रॉम हो जाएगा 30 साल का. आपको फिर एक
यंग लेफ्ट बैक के पीछे जाना पड़ेगा जो 60-70 मिलियन आपको कॉस्ट कर सकता है। लुइस हॉल की इंजरी रिकॉर्ड उतनी अमेजिंग नहीं है, आई एग्री, है ना, उतना अमेजिंग नहीं है उसका इंजरी रिकॉर्ड, बट वो अभी 21-22 साल का है। मतलब 21 साल की उम्र में अगर कोई एक दो बार इंजर्ड हो गया, इट डज नॉट मीन कि वो लाइफ लॉन्ग इंजर्ड रहने वाला प्लेयर है। ही हैज नॉट बिकम एन इंजरी प्रोन प्लेयर येट। सो इंग्लिश है, लीग समझता है, जैसा सबसे बड़ी बात है, आप भूल जाओ इंजरी प्रोन है कैसा, जैसा माइकल कैरिक को लेफ्ट बैक चाहिए वो प्रोफाइल बिल्कुल सूट करता है। तो देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव बीन लिंक्ड विद दैट वन नेम फॉर द लास्ट 2 months, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर लुइस हॉल यूनाइटेड लैंड करती है। ऐसा नहीं होगा ओ वाह भाई क्या कर दिया। आप ये भी कर सकते हो, उसका काउंटर आर्गुमेंट यही कि अगर आपको लाना ही था तो आपने पहले क्यों नहीं लाया। बट ट्रांसफर डील्स इतनी इजी नहीं होती हैं कि ऐश भाई ने मुझे लिंक भेजा, मैंने लिंक पे क्लिक किया, मैं स्ट्रीम पे आ गया। इतना इजी नहीं होता है, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। न्यूकासल को 3-4 सेल्स करनी थी, वो उनको आइडिया नहीं था कि बारसा एंथनी गॉर्डन जैसे प्लेयर के लिए 80 मिलियन दे देगी या गुमारिश की डील इतनी लंबी चलेगी और लास्ट में 75 मिलियन मिलेगा। सो हो सकता है। और ऐश भाई कल आपने बताया था कि वो जो न्यूकासल एक लेफ्ट बैक को डील एग्री कर रही है ना? नहीं वो राइट बैक है, डेडिच, ही प्राइमरली प्लेज राइट बैक। ठीक है लिवरमेंटो उनके पास लेफ्ट बैक राइट बैक ऑप्शन दोनों है, एंड हाँ, अभी उनके पास और लेफ्ट बैक है नहीं एट दिस पॉइंट। लुइस हॉल इज स्टिल द प्राइमरी लेफ्ट बैक। तो हाँ, वो देखो लेट इन द विंडो जाके हम अपना क्यों हर्ट करेंगे चांसेस की। अगर आप 15-20 अगस्त को जाते हो या 25 अगस्त को जाते हो न्यूकासल के पास या फॉर दैट मैटर ब्राइटन के पास कि ठीक है बलेबा उतना इंजर्ड नहीं है, हम लोग 1 महीने काम चला लेंगे, आप बलेबा को हमें दे दो। यार उनको भी तो किसी ना किसी को साइन करना है ना। वहां पे दिक्कत है कि हाँ बोलो। नहीं वहां पे मेरा वो कंसर्न है ना भाई कि वो क्लब भी तो किसी को साइन करेगी एज बैकअप। तो आप जितना लेट करोगे इस डील में, उस क्लब को उतनी दिक्कत होगी रिप्लेसमेंट लाने में। सो एग्जैक्टली अभी सिचुएशन यहाँ में क्या है ना, अभी इंजरी प्रोन की बात कर रहे हैं, मैं वही अभी ये दिखा रहा था, आई एम शेयरिंग समथिंग, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली देख ही लेते हैं ना इंजरी हिस्ट्री क्या है लुइस हॉल की, ठीक है। तो लुइस हॉल इससे पहले वाले सीजन में था नहीं इंजर्ड, उसके बाद एंकल सर्जरी हुई उसकी फेब में 2025 में, विच इज लाइक आफ्टर जनवरी पीक सीजन में वो इंजर्ड हो गया फॉर न्यूकासल। एंड उस पीरियड में मई में सीजन खत्म होने के बाद से लेकर अगस्त 2 तक उसको रिकवरी टाइम मिली, एंड उसके बाद से ही जस्ट मिस्ड 9 गेम्स विद हैमस्ट्रिंग। तो लास्ट सीजन उसकी इंजरी हिस्ट्री उतनी खराब नहीं थी। एक मेजर जो सर्जिकल इंजरी है, सर्जिकल इंजरी के बेसिस पे ये नैरेटिव बना लेना कि वो इंजरी प्रोन प्लेयर है, थोड़ा सा अनफेयर है टू द 21 ईयर ओल्ड प्लेयर। मैं आया आज भाई 10 मिनट के लिए, मेरे दिमाग में ना एक अभी बैठे बैठे एक थॉट आया था, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू एंड प्रोबब्ली आप और कुक कर लेना चैट के साथ कि एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर। हाँ बिंदास, ठीक है, मैं यहाँ इनियोस को डिफेंड करने नहीं आया हूँ, मैं बस एक थॉट प्रोसेस प्रेजेंट कर रहा हूँ। शायद उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, वो गैम्बल कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द राइट अप्रोच। ऐसा हो सकता है हाइंडसाइड में कि इनियोस और जो भी यूनाइटेड बोर्ड है, कैरिक इंक्लूडेड, दे आर नॉट गनिंग फॉर द टाइटल। उनके दिमाग में नहीं है दैट वी आर टाइटल फेवरेट्स अनलेस समथिंग ड्रास्टिक हैपेंस, बाकी सबने फकअप कर दिया और हम चांस के साथ हैं अप्रैल मई के आसपास। दैट्स अ सेकेंडरी थॉट। What if our target for this season is only top 4 और top 5 कि एक और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन लेके आओ मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद इस सीजन जैसे हमने देखा चैंपियंस लीग का पैसा आया, एडिडास का आया, बेटवे का आया, हॉयलैंड को बेचा, 2-3 हमने और छोटे-छोटे लोन डील्स निकाली, विटेक को बेचा। एक और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, एक और चैंपियंस लीग पैसा, एडिडास का पैसा, बेटवे का पैसा। इस विंडो में चेल्सी हैव गॉन बिग, Arsenal have gone big, Man City have gone big, United have not gone big. So probably again like I'm saying devil's advocate play करने की कोशिश कर रहा हूँ, not saying this is the right approach. What if they are saving their money for next season where you know that you might to bring in a Bruno Fernandes का replacement, and if you are bringing a Bruno replacement it is going to cost you between 100 to 125 million. उस समय आप ये नहीं कह सकते यार कि we cannot spend that much money because you are replacing heartbeat of your team if Bruno decides to leave. So इस season you play softly, you play quietly, आप top 4 top 5 के ambition से जाओ, and they are putting huge amount of trust अपने first team के squad पे। आप अगर first team का squad pull करोगे तो I think United has
probably fourth, if not then third best फर्स्ट टीम स्क्वाड, अगर इंजरीज आप साइड कर दो. अगर आप 38 गेम खिलवा देते हो फ्रॉम लीचा, डेलिक्ट, शॉ, डैलो, लामेंस, एंड्रे सैंटोस, टिलीमेंस, ब्रूनो, कुनिया, एम्बेमो, शेस्को, तो आप टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में फिनिश कर सकते हो. तो मे बी देयर एम्बिशन फॉर दिस सीजन इज दैट, सो दे आर नॉट गोइंग बिग इन द मार्केट. एंड ये जितना भी चिंदी चोरी है, जितना भी पैसा बचा रहे हैं, जितने भी ये अलग सा अप्रोच है, they try to go big in the next transfer market. This is just a thought. It might be the only reason. इसके बाद अगर वो आके बोले ना विंडो खत्म होने के बाद कि प्लेयर नहीं था, मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं था, we could not negotiate, he was not fitting Michael Carrick's profile, I am not going to buy it. अगर वो आके बोले कि एम्बिशन हमारा टॉप 4, टॉप 5 था इस सीजन and we have a trust in this first team squad, I am still willing to buy that ideology. मैं थोड़ा सा उसमें था. I get your POV. उसमें क्या है? Again, devil's advocate POV. One of the. It's like it's not like what you think and you want it to happen. It's what Ineos is thinking, right? आप उनके perspective से सोच रहे हो कि सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि why the fuck are you not spending money? Yeah, but the thing is right now कि अगर ये अभी spend नहीं किया ना, it's not about spending as well right now. मुझे क्या डर लग रहा है at this point is there is a manager who is setting things right, playing the basics right. एंड उस बंदे को बैकिंग नहीं मिलेगी ना, आई कैन प्रॉमिस यू शशि भाई, लॉट ऑफ द फैंस आर स्टिल क्वेश्चनिंग इनियोस, ग्लेजर और ट्रांसफर विंडो पे जो एनिमोसिटी है अराउंड, सब भूल के एवरीवन विल कम एंड आस्क फॉर कैरिक्स हेड कि फुटबॉल सही नहीं आ रही है. एंड कैरिक कैसे सक्सेसफुल हो गया एट दिस पॉइंट? क्योंकि उसको राइट नाउ आप जो बोल रहे हो कि ठीक है, दे वांट टू सेव इट, दे वांट टू सेव मनी, स्टार्टिंग टू दे वांट टू प्लान फॉर द फ्यूचर कि ब्रूनो का बैकअप, ब्रूनो का रिप्लेसमेंट लाना है, एंड वांट टू सी कि अगले सीजन पॉसिबली हैव अ ट्रांसफर विंडो लाइक लिवरपूल हैड, लाइक विद द गोल फुल मॉन्टी. बट द करंट अभी जो डिमांड है, नीड्स है ना, वी आर नॉट इवन प्लेइंग अ 38-40 गेम सीजन, इट्स अ 70 गेम सीजन. सो अब के डिमांड में तो प्लेयर चाहिए. हाँ, अब के डिमांड में प्लेयर चाहिए. वही तो कह रहा हूं ना कि दे आर गैम्बलिंग टू मच ऑन दिस फर्स्ट टीम स्क्वाड, जो कि आपके पास लीचा, डेलिक्ट, मेसन माउंट, ये तीन, यार खुदा ना खास्ता लूक शॉ का पिछला सीजन जो था वो एनामली था, अगर वो भी अपने पुराने उसमें चला गया नजरिए में, तो वो भी आपका इंजरी प्रोन प्लेयर है. तो 4 आउट ऑफ 11 इफ योर इंजरी प्रोन प्लेयर्स, ठीक है, सेंटर बैक में आपके पास लेनी योरो है, मगवायर है, डेलिक्ट है, शायद बच जाओगे. लेफ्ट बैक में भी शायद आपके पास मजरावी, डॉर्गू, लूक शॉ, हैरी अमास को नहीं बेचोगे तो वहां भी शायद बच जाओगे. एंड्रे सैंटोस का आपके पास बैकअप नहीं है इस टाइम पे. और एंड्रे सैंटोस और टीलेमेंस वेरी सिमिलर प्रोफाइल से इन टर्म्स ऑफ द रोल्स दे यूज्ड टू डू फॉर द क्लब्स. टीलेमेंस थोड़ा सा डिफेंसिवली ज्यादा सॉलिड है देन सैंटोस. What he has done in Aston Villa. I would beg to differ. I think जितना मैंने सैंटोस को प्री सीजन में देखा है, प्री सीजन में he's doing well. हाँ, he is more of that profile जो कि यूनाइटेड को नंबर 6 चाहिए. आप टीलीमेंस, टीलीमेंस, मेनू, टीलीमेंस, माउंट नहीं खिला सकते हो. नहीं, वो चांस ही नहीं है भाई. एक आज एक मिडफील्ड में देखना चाहता हूँ अगेंस्ट लीड्स इज सैंटोस, टीलेमेंस एंड ब्रूनो. हाँ, that will be a great midfield for Champions League football. माउंट नहीं है तो भाई वही है ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन ही नहीं है. माउंट है नहीं, मेनू फिट नहीं है, उगारते इंजर्ड है, तो देखना भाई, वो देखना पड़ेगा अनलेस आप वो फ्लेचर ब्रदर्स को लेके आते हो तो. एक मैं एज भाई बिफोर आई लीव, मैं आपको एक और फूड फॉर थॉट देता हूं. आफ्टर सर एलेक्स, द बेस्ट फुटबॉल किस मैनेजर ने खिलाया था? ओले भाई. ओले गनर सोल्शायर की सबसे प्यारी चीज क्या थी? उसका जो काउंटर अटैकिंग था, ब्रूनो फीडिंग बॉल्स टू मार्शियल, ग्रीनवुड, रैशफोर्ड, डैन जेम्स को यूज करता था वो. यस. उस टीम की हैमस्ट्रिंग क्या थी, वीकनेस क्या थी? मिडफील्ड उसमें फ्रेड मैकटोमिने. हां, हमने एक नाम दे दिया था बेचारों के लिए, मैकफ्रेड, जो कि आज रिग्रेट होता है मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस के लिए, बिकॉज दे वर डूइंग समथिंग जो कि उस समय किसी और मिडफील्डर के बस की नहीं थी. वहां पे we were very technically handicapped, टेक्निकली हैमस्ट्रंग की. अगर मैकटोमिने और फ्रेड के पास बॉल जाती थी, या तो 40 यार्ड का लॉन्ग बॉल होता था या बैक पास होता था. आज अगर मैं फ्रंट 3 की बात करूं तो प्लेइंग स्टाइल ओले और कैरिक की टीम का ऑलमोस्ट सेम है. कुनिया, एम्बेमो, शेस्को थ्राइव ऑन काउंटर अटैक, वेरी गुड ड्रिबलर्स, वेरी गुड एट फाइंडिंग स्पेस, वेरी गुड एट रिसीविंग द बॉल्स एंड प्लेइंग ऑन द हाफ टर्न. ब्रूनो फर्नांडिस इज स्टिल देयर.
Now this team's midfield, technically, Menu, Tielemans, Andre Santos, Mason Mount, it has elevated. Yeah. तो अगर इंजरी नहीं हुई तो आप इस स्क्वाड को प्लेयर नहीं भी दोगे ना, तो माइकल कैरिक का फुटबॉल नहीं डिप करेगा. नहीं डिप नहीं करेगा. आई कैन एब्सोल्युटली सी माइकल कैरिक का फुटबॉल, बॉल आते ही आगे पास करना है, वेरी प्रोग्रेसिव. डू नॉट वेट. ओले रादर यूज्ड टू प्ले लिटिल पेसिमिस्टिक इन सर्टेन गेम्स. कैरिक ने बड़े गेम्स में नेवर थॉट अबाउट दैट थिंग. इवन कैसेमिरो ने अपने इंटरव्यू में वही चीज बोला ना कि इवन एज अ डीएम माय फर्स्ट थॉट इज आई गेट द बॉल एंड पास फॉरवर्ड बिकॉज वी वांट टू स्कोर गोल्स. वो पॉजिटिव अप्रोच एक आया है कि वी विल स्टिल वांट टू डोमिनेट गेम्स व्हाइल नॉट बीइंग पैसिव. ये बात बिल्कुल सही है. एंड अभी अपने पास जो मिडफील्डर है, एंड्रे सैंटोस बॉल मिलते आगे, टीलेमेंस बॉल मिलते आगे वो लाइन ब्रेक करेगा, ब्रूनो. एंड पता है एंड्रे सैंटोस और टीलेमेंस आने के बाद आई वाज वाचिंग अ ब्यूटीफुल वीडियो बाय जेम्स लॉरेंस एल्कॉट, आप देखना वहां पे, बढ़िया से एक्सप्लेन किया था उसने. अब टीलेमेंस के आने के बाद ना ब्रूनो को डीप जोन्स में आने की जरूरत नहीं है. हाँ. उसको आने की जरूरत नहीं है. वो वही खेल सकता है जहां ओले के टाइम पे वो मैकटोमिनी और फ्रेड के बाद, क्योंकि उसको नहीं आने की जरूरत थी. वो बहुत ही सॉर्टेड थे टैकल वाइज और अपने स्पेस को विन करने के लिए. तो वही है भाई. आई थिंक ये सब कुछ इंजरी भाई. अगर आप लूक शॉ को 31 साल की उम्र में वॉश्ड बोल सकते हो तो 28 + 4 32 साल की उम्र में कोई भी लेफ्ट बैक जो फुल बैक है, जिसको माइकल कैरिक के सेटअप में अगर चाहिए कि वो कॉन्स्टेंटली बॉम्ब फॉरवर्ड करते रहे, तो अगर मैं 31 साल के लूक शॉ पे रिलाई नहीं कर सकता हूं तो मैं 32 साल के रोम पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगा. सो आई वुड वांट अ प्रोफाइल लाइक लुइस हॉल और अ पैट्रिक डॉर्गू, आइडियली लुइस हॉल, हाँ, और अ मलिक डियूफ. और प्रोफाइल वाइज बोलूं तो जेड स्पेंस भी, बट वो क्वालिटी कैलिबर नहीं है, तो इसलिए आप उनके पीछे नहीं जा रहे हो. तो दैट्स व्हाई वी आर लाइक मैड आफ्टर लुइस हॉल कि भाई वो आ जाए. तो इंग्लैंड का प्लेयर है भाई, लीग में रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा. ट्रेंट जैसे टंटे नहीं होंगे इसके मेरे को रियल मैड्रिड जाना है. लाला इज सेइंग, आई थिंक क्या लाला क्या बोल रहे हैं कि आई थिंक हम लोग एक चीज शायद भूल रहे हैं शशि भाई की लूक शॉ इन हिज लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो मुझे नहीं लगता यूनाइटेड शायद एक्सटेंड करेगी लूक शॉ को. सैलरी कम लेके करेगा तो कर देगा, कोई और सैलरी देगा भी नहीं लूक शॉ को, वो भी उसको पता है. यही दिक्कत है. अगर लूक शॉ कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ हो जाता तो रॉम एंड लुइस हॉल कुड बी ग्रेट ऑप्शंस. अगर लुइस हॉल बहुत अच्छा ऑप्शन है. मैं रॉम को तो बोल ही नहीं रहा, रॉम बहुत अच्छा ऑप्शन है. बट मैं 2 साल में एक और यंग लेफ्ट बैक के हंट में नहीं जाऊंगा अगर मेरे पास लूक शॉ है अभी. या तो आप लूक शॉ को निकालो इस विंडो में, लूक शॉ को आप रिप्लेस करो डेविड रॉम से, और फिर आप लुइस हॉल लेके आओ. ये पक्का रियल मैड्रिड फैन है ये. कामाविंगा सही रहेगा. कामाविंगा तो भाई शुरू से सीजन से बेच रहे हैं हमको. कामाविंगा के लिंक्स भी आ गए फटाफट अभी बहुत. अभी मना कर दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा. कैसे बेच दोगे? प्लेयर नहीं मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा हूं. नहीं बेचेगा. जोसे मोरिन्यो इज फिक्सेटेड विद रियल मैड्रिड टू हैव मल्टीपल प्लेइंग 11s इन मल्टीपल कॉम्पिटिशंस टू विन ला लीगा एंड यूसीएल. उसको पेरेज ने बोल दिया, उसको भाई खुला पर्स दिया है पेरेज ने इस बार. उसके करियर का आखिरी अपॉर्चुनिटी है ये. इसके बाद उसको कोई बड़ा गिग नहीं मिलने वाला. ये भी बाय चांस, मतलब ही इज वेरी लकी भाई. उसने कुछ तो कर्म बहुत अच्छे किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में. he got this Real Madrid job because he is absolutely not deserving of this job at this point of time in his career. वो बेल्ट ट्रीटमेंट देना है पेरेज को तो पक्का अपना बंदा उसने बैठा दिया है कि ये है गुंडा, इससे तुम बकचोदी करके दिखा दो. तुमने ओलोंजो को तो भगा दिया, तुमने अबलोआ को भगा दिया, इससे बकचोदी करके बताओ. ये बताएगा. ये 2 साल के लिए आया है, 2 साल ही रहेगा ये. एंड 2 साल में एटलीस्ट एक आध ट्रॉफी जिता के ये चला ही जाएगा. बिकॉज इन दी एंड इसको रिटायर हो जाना. अगर ये चैंपियंस लीग जीत गया, इसको रिटायर हो जाना चाहिए. यस, लेगेसी बट ये नहीं करेगा इस बंदे की. बट ये नहीं करेगा. कुछ लोग में होता है ना, जैसे गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड यू लिव लॉन्ग एनफ टू सी योरसेल्फ एज अ विलन. मुझे मोरिनो के साथ ये लगता है, यू नो, एट दिस पॉइंट. आई वांट हिम टू बी सक्सेसफुल, बट यार वो दिमाग खराब हो गया यार उसकी डॉक्यूमेंट्री देख के. साला 2013 में बोल रहा है कि he had signed a contract, मतलब ऑलमोस्ट अग्रीड टर्म्स साइंड. क्या ट्रांजिशन होता है यार पे. मतलब आप सोचो. एंड चैट, आप भी मुझे बताओ चैट, ओवर 132 पीपल वाचिंग राइट नाउ. लाइक द स्ट्रीम एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मिड विकेट मैनेजर एज वेल. आप लोग चैट में मुझे बताओ शशि भाई, फर्गसन के बाद अगर मोरिनियो आता, द ट्रांजिशन, मोरिनियो बोलता मुझे प्लेयर्स ऑल आके दो, बिकॉज मीडियोकर स्क्वाड थी यूनाइटेड के पास उस टाइम पे. वो सर एलेक्स फर्गसन था तो हम जीते थे विद फ्यू इंडिविजुअल्स. और वो बोर्ड ने
डेविड मॉयस को बोल दिया कि हम आपको नहीं देंगे साइनिंग, वो मुरीनो को नहीं बोल पाते मोरिनियो ना, को नहीं बोल पाते, पहले ही विंडो में नहीं बोल सकते ना कि मैं आपको साइनिंग नहीं दूंगा। उस समय मे बी वो चीज आई थी उसको समझ, एंड इसलिए ही डिड नॉट गो नहीं टू भाई, उसने यूनाइटेड। बड़ा क्लियरली बोला, आई डिड इट चेल्सी, फॉर लव, डिड फॉर चेल्सी। लव, चेल्सी, ही कॉल्ड सर एलेक्स फर्ग्यूसन, ही वाज क्राइंग या कि आई कैन नॉट टेक दिस जॉब, बट यार मतलब साला। या और फिर जब यूनाइटेड आया या तो उसकी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज हो गई थी। या He had become a bit softer after getting sacked by Chelsea the second time, after getting sacked by Real Madrid. उसी time पे he had lost या his father. या So we did not get the best version of Jose Mourinho. That's fine, but still, our last European trophy came under him. That is the fact. 2 ट्रॉफीज दिए उसने हमें, दिए राइट? तो 3, अब एक को मत काउंट करो, बट अच्छा 3 वो, दिए। अरे नहीं, वो तो बस जेसी लिंगार्ड का गोल था भाई, दैट्स इट। वो गेम उसी के लिए था। बाय द वे इस वीकेंड को, आज आज है ये अपना पीएस, आज अपना यूनाइटेड लीड्स है। सो व्हाट्स द स्टार्टिंग 11? अगर मैं स्ट्रेट पूछ लूं, व्हाट्स द डिजायर्ड स्टार्टिंग 11 यू वांट टू सी आज यूनाइटेड वर्सेस लीड्स? आज आई डोंट नो इफ यू आर डूइंग वॉच अलोंग, मैं तो नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गोना चिल एंड वॉच, बट अब कर रहे हो तो आई विल जॉइन। स्टार्टिंग 11 क्या Lomans, होगा? Lomans, because you only have 2 games left before the season starts. Yeah. So closer to the first team that Yeah. आप हल के अगेंस्ट खिलाना चाहोगे. So Sene Lomans, अगर लिसांड्रो फिट है, रेडी है, लिसांड्रो विथ लेनी यूरो, बिकॉज मगवायर दोनों मैच खेल चुका है, ठीक है. एंड लेफ्ट बैक पे लुक शॉ, राइट बैक पे मजरावी, बिकॉज आई डोंट थिंक डेलो इज फिट इनफ राइट नाउ. एंड्रे सैंटोस, टिलेमेंस, ब्रूनो, जो हम देखना चाहते हैं फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन में और आज भी. Then Ahmad from the right, Cunha from the left, and Mbemo up top. Mbemo up top. No, fair enough. और I don't know if you guys have checked already, Stratford Paddock में जाके देखना, एडन हेवन की मॉम का इंटरव्यू 30 मिनट्स का है, टॉप इंटरव्यू है। आपको पता चलेगा कि एडन हेवन का मेंटालिटी क्या है, एडन हेवन कैसे आया है। एंड आई नो कल लुइस केली का जो लिंक्स आया था, उसके बाद मैंने एक ट्वीट डाली थी कि द लास्ट टाइम एन आर्सेनल टैलेंट्स मम वाज एन एजेंट, यू नो ऑल व्हाट हैपेंड। बट लुइस केली का पूरा डाउन चला गया भाई। ही इज गोना स्टिक एट आर्सेनल, आई थिंक आर्टेटा इज गोना यूज हिम अ लॉट, बट देयर मिडफील्ड इज ऑलरेडी स्टैक्ड। आई थिंक उसके वो और उसके एजेंट भी देख रहे होंगे कि बहुत कुछ दे वांट टू गेट सम न्यू, लाइक वेरी वेरी प्राइज्ड मिनट्स एज वेल। यहाँ बोल रहे कि चेल्सी माइट आल्सो गेट ह्यूज मनी फॉर एंजो फर्नांडिस। यस, एंजो फर्नांडिस के लिए बिड मार रही है सिटी, 120 मिलियन। दोस्तों कीप ऑन लाइकिंग द स्ट्रीम दोस्तों, मैं चैट ले रहा हूं धीरे धीरे, कोई नहीं आ रहा है भाई, स्टॉप होपिंग। लुइस पेज आएगा दोस्तों, लुइस पेज। ऐसे कैसे नहीं कोई नहीं आएगा, लुइस पेज आएगा ना भाई, लुइस पेज आएगा भाई। लेकिन मतलब द कॉमन कंसेंसस शशि भाई राइट नाउ इज कोई नहीं आ रहा है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं आ रहा। बट यू नो व्हाट फैंस आर एक्चुअली वरीड अबाउट राइट नाउ, एंड इट्स अ फेयर वरी, कि यस थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, 31 अगस्त तक देखते हैं। यस, इन द एंड लेट्स से हम प्लेयर्स लेके आ गए, but the integration to the team is a little late than ideally what it was supposed to. Agreed. Right. This is not an ideal window. No. आप एडम वॉर्टन, लुइस हॉल और मटेटा को भी लाके अगर गिरा दोगे, इनको टाइम लगेगा सेटल होने में। दिस इज नॉट एन आइडियल विंडो, जहां पे आपने मैनेजर को उस प्लेयर को समझने की टाइम नहीं दिया है, जेल होने का टाइम नहीं दिया है, एंड सिंपली यू हैव टोल्ड कि गो प्ले। पहले 3 मैचेस माना इजी हैं, आप उस मतलब उस एंगल से देख रहे हो यार, देन वो कहना कि वी हैव फुटबॉल पीपल एट आवर क्लब, सिंक नहीं बैठ रहा है। या तो आप डिसाइसिव होके एक्ट करोगे, या फिर आप बच्चों की तरह मैनेज करोगे, जो अभी तक लग रहा है कि ये लोग कर रहे हैं। जो मैं और आप होते, अगर मान लो क्या बोलते हैं मैनेज कर रहे होते यूनाइटेड में, तो शायद हमारा अप्रोच होता वो वाला, यार हल है, देख लेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये प्लेयर वहां गया, ये प्लेयर वहां गया, तो ये शायद सस्ते में मिल जाएगा। मतलब आपके पास इतना फुटबॉल एक्यूमेन है, आप मैन सिटी के सक्सेसफुल फेज को देखते हुए आए हो यूनाइटेड में। इस अप्रोच के साथ तो मैन सिटी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। यू वांटेड अ प्लेयर, यू स्काउटेड, यू गॉट इट, you negotiated on the price, that I will give credit to Berardi and Wilcox, they never overpaid. After they have left, तब जाके इन्होंने 100 मिलियन का 65 is the max we have paid for a player last 2 windows, और उनके टाइम पे ग्रीलिश था जिसके लिए 100 मिलियन किया था, but that was a market opportunity that you had to pay. right. कभी आपने डिली डाली नहीं किया जितना डिली डाली आप कर रहे हो आज के टाइम पे। right. no, मेरा उसमें क्या हमेशा से फीडबैक रहा है ना, मैं चैट तो
थोड़ा पेशेंस दोस्तों, मैं लेता हूँ चैट थोड़ा थोड़ा। 100 रुपए का सुपर चैट आ चुका है दोस्तों प्रतीक भाई के से, थैंक यू सो मच भाई फॉर द लवली सुपर चैट, एंड थैंक यू सो मच, एंड रियली अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट भाई। यहाँ पे ज्वेल्स भी आ चुके हैं, 10 ज्वेल्स आ चुके हैं, 440 ज्वेल्स भाई, क्या बात है। डीजे स्पीक्स फुटबॉल, अंक अलर्ट, यस, अंक टॉक्स फुटबॉल दोस्तों, हम लोग दोनों अंक्स यहाँ बात करें यूनाइटेड, दोनों पहलू पे बात कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू गो ऑल बलिस्टिक एज वेल, बट मैं यहाँ पे शांत भी हो रहा हूँ। शशि भाई का विलेन आर्क कुछ दिन में आएगा दोस्तों, सो प्लीज वेट फॉर वो भी आने वाला है। एंड 10 ज्वेल्स यहाँ पे हो चुके हैं फ्रॉम यूट्यूब यू है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दोस्तों, एंड प्लीज प्लीज ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू मिड विकेट मैनेजर एज वेल। हम लोग तो पूरे सीजन हम लोग स्ट्रीम करेंगे, आई डोंट नो कौन आज वॉच अलॉन्ग कर रहा है फॉर द क्या बोलते हैं प्री सीजन गेम, बट जाके जो यूनाइटेड क्रिएटर्स आज वॉच अलॉन्ग कर रहे हैं सबको आज प्यार दिखाइए दोस्तों। यहाँ बोल रहे हैं आई थिंक इट्स क्लियर नाउ दैट लुइस हॉल एंड एमएलएस आर द टू टारगेट्स नाउ। सी आई डोंट थिंक सो कि एमएलएस टारगेट है, बट आई डोंट थिंक सो, एमएलएस लास्ट ईयर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विद आर्सेनल, आई डोंट थिंक सो ही इज राइट नाउ विलिंग टू लीव, बट एक उस पे एक होपीएम देता हूं आप लोगों को, दे हैव मेरिनो, जुबीमेंडी, ब्रूनो गिमारेश, ठीक है, डेक्लन राइस, they have got they have Gimares Calfiori already है, so left back में तो उसको चांस मिलेगा नहीं, CDM position is already stacked, I know Merino injured रहता है, but you know what, लोग ये आर्गुमेंट यूज करके बोल रहे हैं कि शायद ही आ जाए निकल ले क्योंकि उसके शायद मिनट्स चाहिए, बट आर्टेटा ने एंड ऑफ द सीजन में ना माइल्स लेविस स्केली पे ट्रस्ट दिखाया था इन चैंपियंस लीग एंड इन द लीग फेज। वो जो लास्ट 5-6 गेम्स में जो उन लोग ने अच्छा खेला विद कैलाफियोरी, लुइस केली और इन लोग ट्रोसार्ड के साथ, दे एक्चुअली लुक बेटर, सो आई डोंट थिंक सो आर्सेनल लुइस केली को बेचेगी, बट व्हाट डू यू थिंक इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी विद दिस डील? नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। आर्सेनल सोर्सेज ने क्लियर कर दिया ना कि ही इज नॉट फॉर सेल, हमने कोई ऑफर नहीं किया। यूनाइटेड और चेल्सी सोर्सेज बोल रहे हैं कि ऑफर किया है, वो कह रहे हैं नहीं किया, तो आई डोंट थिंक ही हैज बीन ऑफर्ड, और ऑफर किया भी है तो यार पता नहीं, मतलब इज ही द प्लेयर दैट आई हैव वेटेड फॉर लास्ट 2 months टू सी इन माय मिडफील्ड? नो। कैन ही इंप्रूव माय लेफ्ट बैक? आई वांटेड हिम सिंस लास्ट जनवरी बाय द वे, मुझे अच्छा, चाहिए ओके ओके, तो आई पता नहीं। ये बहुत मैं देख रहा हूँ यूनाइटेड फैंस का एक सेंटिमेंट जा रहा है एड वुडवर्ड पे कि एटलीस्ट ही वुड हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल। नो, दैट्स अ मिस्टेक वी शुड नॉट बी मेकिंग दोस्तों, नो वे नियर। उससे बचने के लिए आज हम इस चिंदी चोरी वाले मोड में हैं, जहां पे हम अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं एज अ क्लब हु डू देयर डील्स वेरी डिलीजेंटली। सो वो नहीं चाहिए अपने को दोबारा कि हम एलेक्सिस सैंचेज को 500k वीक दे रहे हैं और पता नहीं सैंचो को दिया हम लोगों ने कितना। सैंचो वाज शॉक्ड व्हेन ही एंड हिज एजेंट, इट्स अ ट्रू स्टोरी, वो उसके एजेंट बैठे थे, दे वर एक्सपेक्टिंग 160, दे वर ऑफर्ड मोर देन 250 प्लस बोनसेस मिला के ऑलमोस्ट 300 था उसका, करेक्ट। तो all the fans United, I know this is not a United fan, but all the United fans I'm seeing on Twitter as well, and थोड़े से जो भी देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी गैसलाइट कर रहा है कि एड वुडवर्ड होना चाहिए था, वो आपको बड़े नाम लेके देता, हम बड़े नाम लेके आए थे, हम ओवरस्पेंड किए थे, हम सैलरी ज्यादा दिए थे। आज इन्फ्लेटेड सैलरीज की वजह से ना हम सैंचो बेच पाए, ना रैशफोर्ड बेच पा रहे हैं, ना माउंट बेच पा रहे हैं, ठीक है, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं बोलूंगा लूक शॉ भी नहीं बेच पा रहे, राइट, फॉर एन इंजरी प्रोन प्लेयर। सो मेनी, एंड भाई सबसे बड़ा केस तो रैशफोर्ड है, एक प्लेयर जो रिपीटेडली बोल रहा था कि यूनाइटेड छोड़ना चाहता है, आज हम इस कगार पे हैं कि उसको हमें यूज करना पड़ रहा है। मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं एट दिस पॉइंट, आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट रैशफोर्ड इज गोना स्टे एट मैन यूनाइटेड। मैं अब मैं सोच ही नहीं रहा हूं कि वो क्लब से निकलेगा। आई जस्ट वांट एटलीस्ट, ठीक है तो आ गया, नाउ फ्रॉम द बेंच व्हेन यू आर प्लेइंग, give me 15 to 20 goals and assists this season and leave next season. At least give a decent price, क्योंकि last year of contract है, एक decent price तो आ ही जाएगा। But I'll ask you again, रैशफोर्ड का हल्का सा भी रिडेम्पशन आर्क आपको लग रहा है अंडर माइकल? बिकॉज माइकल कैरिक इज माइकल कैरिक, यू नो, इसके अंडर डू यू सी अ Rashford redemption arc, or it's the same old fucking story? I might sound salty, मैं थोड़ा सा हो सकता है लोगों को लगे that I'll have an agenda against him. I don't have an agenda against him. For me, he stopped being a United player.
जब उसने जिस तरीके से एरिक टेन हाग के टेन्योर में और एमरिम के टेन्योर में बिहेव किया था, फॉर योर मैनेजर टू कम आउट एंड से that I would rather fucking put my goalkeeper coach in playing 11 than players who do not care for the club Yeah. or do not want to give their all in training or on the pitch. It says a lot. Yeah. Or you will not hear me criticize Rashford throughout the season. ठीक है, अगर वो रहता है, अच्छा खेलता है, तो मैं तारीफ कर दूंगा, बुरा खेलेगा मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बिकॉज फॉर मी ही इज नो लॉन्गर अ यूनाइटेड प्लेयर। वो बस एक समस्या है जो इस समय हमारे क्लब के सर पे पड़ा हुआ है, बिकॉज नो क्लब इन द वर्ल्ड वांट्स टू हैव मार्कस रैशफोर्ड ऑन देयर पे बुक। It's the wages, it's not the player's ability that they're talking yes, about. it is not the ability, it is a mix of his salary and his attitude. Yeah, ठीक है, सो मेरे लिए भाई रैशफोर्ड इज नॉट अ यूनाइटेड प्लेयर। वो खेले बहुत अच्छा, रिडेम्पशन आर्क करे बहुत बढ़िया, ना करे मेरी दुआ से, बट आई डोंट गिव टू फक्स अबाउट मार्कस रैशफोर्ड एट मैन यूनाइटेड। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना, एंड यू नो गोल्स एंड असिस्ट जब आएंगे ना, पूरी नैरेटिव चेंज हो सकती है। पूरा नेगेटिविटी का जो पूरा का पूरा लोगों के ओपिनियंस एंड लोगों की फीलिंग्स पलटने में देर नहीं लगती। एश भाई, सॉरी टू यूज अ लैंग्वेज लाइक दिस, और जितने लोग चैट में, फुटबॉल फैंस की कोई जात नहीं होती। हम आज जिस बंदे को गाली देते हैं ना, इमेजिन करो रैशफोर्ड ने अगर मैन सिटी के अगेंस्ट हैट्रिक मार दी चौथे गेम ऑफ द सीजन में, खत्म, सारे नेगेटिविटी खत्म। सेम पीपल हु आर लाइक हेटिंग ऑन हिम विल एंड अप लिकिंग हिज फीट भाई, कि भाई मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर बॉर्न, एकेडमी लैड, रिडेम्पशन आर्क, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रोडिजी इज बैक। वी आर अ वेरी फिकल बंच भाई, फुटबॉल फैंस है। वही तो बोल रहा हूं मैं। और टॉकिंग अबाउट फिकल फुटबॉल फैंस, आई एम सो सॉरी अगर कोई ऑफेंड भी हो रहा है, बट वी हैव सीन दिस पैटर्न अ लॉट। मैं वही नहीं बोल रहा था स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम। आज हम ट्रांसफर विंडो पे पूरी यूनाइटेड फैंस की फ्रस्ट्रेशन एकदम विजिबली है, और वो जायज भी है। जायज है, बिल्कुल जायज है। बट दिसंबर में अगर हम 6th-7th में होंगे, ठीक है, गोल्स कंसीड कर रहे हैं, ये वो हो रहा है, rather than questioning the management and the board for not getting Michael Carrick the players that he wanted to have a successful season, because pre-season में United looking sharp. We have earned the most points when he joined in the Premier League. Football is attractive. We have scored goals. We have crossed the 65 goal mark. Ye same fans, and I want to remember all those fans. I'm वही बोल रहा हूँ मैं. I don't want this to happen, but if this happens, I'm gonna iterate again. ये same fans आके Carrick, they will ask for Carrick's sacking. And इसका responsible कौन होगा? Ineos. अगर आपके ट्रांसफर स्ट्रेटेजी, मुझे तो लगता है कि दिस इज फिकल माइंडेडनेस। मुझे लग रहा है कि नॉट इन फिकल माइंडेडनेस, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अ ट्रांसफर स्ट्रेटेजी फॉर इनियोस, बिकॉज अगर आपको अप्रैल से पता है कि आप चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रहे हो, राइट, एंड इफ यू आर टेलिंग मी राइट नाउ कि यस हम लोग मैथ्यूस फर्नांडिस के लिए नहीं गए, सो वी आर गोइंग फॉर बजट ऑप्शंस एंड वी वांट टू प्लग इन द गैप्स। बजट ऑप्शंस आपको अप्रैल से मिल सकते थे। अगर स्पर्स relegate होने वाली थी, and they were able to get a personal terms agreed with Senesi, who was a sought after center back by many clubs, by the way. Robertson Senesi से अगर Spurs personal terms agreed लेकर आ सकती है, why was United still playing the waiting game? I'll give you another point. अगर एडरसन के डील पे काम किया 1-1.5 महीना, वहां भी वेस्ट हुआ। मेडिकल you were not happy, okay, great decision, but a time was wasted. जैसे कि चुआमिनी के पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करते करते वी वेस्टेड टाइम। एंड आप देखो, जो जितने मेरे चैट में, आपके चैट में बहुत लोग आके बोले होंगे कि मामादू संगारे वाज द वन वी नीडेड, ग्रेट प्लेयर, फैंटास्टिक सीजन। मामादू संगारे 41 मिलियन पाउंड्स पे गया ब्रेंटफोर्ड, एंड आज कल परसों ही क्रिस्टल पैलेस डाल रही है बिड लमीन कमारा पे। रिजेक्ट हो गया 54 मिलियन का। 50 रिजेक्ट हो गया। यूनाइटेड मॉनिटरिंग द होल सिचुएशन। वो तो मॉनिटर तो कर रहे हैं, मॉनिटर तो हम 7-8 प्लेयर्स को कर रहे हैं वही। बट भाई मामादू संगारे पे मैं वही है भाई, मामादू संगारे आएगा, 1-2 महीने अच्छे नहीं होंगे, कुछ गेम्स अच्छे नहीं होंगे, तो
नैरेटिव फिर वही है ना, आपने लीग ऑन से एक प्लेयर लेके आया जो वहां अच्छा कर रहा था, मैनुअल उगारते 2.0, भाई संगारे बहुत अच्छा प्लेयर होगा, बट अगर आप एंड्रे सैंटोस ले आ चुके हो आपके टीम में, तो आपका अगला प्लेयर ऐसा होना चाहिए मानू कोने जैसा, जिसको वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि अभी गोलब्रिज आई थिंक पिछले 1-2 दिन से काफी इज गोइंग बिग ऑन मानू कोने की, उनके कैंप से बातचीत हो गई है, दे हैव मेट, 48 आवर्स में न्यूज़ आया करके, यस दे हैव मेट विद देयर कैंप, दे हैव एग्रीड, डिसाइडेड क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको फिर मानू कोने जैसा प्लेयर चाहिए, संगारे जैसा प्लेयर नहीं चाहिए, या तो आप एंड्रे सैंटोस को छोड़ के संगारे को लाते। तो एज भाई अभी ना यूनाइटेड फैन बेस, क्रिएटर्स, हम सब, बिकॉज अल्टीमेटली हम भी फैंस हैं ना यार, हम उस जोन में जा चुके हैं ना, जेड स्पेंस चला गया भाई, इसको ले लेना चाहिए। मैंने तो स्ट्रेट स्ट्रीम शुरू होने से आपने देखा, मैंने बोला घबराओ मत, जेड स्पेंस नहीं चाहिए था, अगेन एक राइट फुटेड प्लेयर हम लेफ्ट बैक पे खिलाते। एग्जैक्टली अब मामदू संगारे वहां चला गया, भाई इसको ले लेना चाहिए था, लमीन कमारा से लिंक हुई क्रिस्टल, भाई इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि वी आर सो डेस्परेट इन ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमारी अगली साइनिंग कौन होगी, कि कोई भी प्लेयर अगर लिंक हो रहा। हमारी आखिरी साइनिंग कब हुई थी? 14 जुलाई को हुई थी, टिलीमेंस अनाउंस हुआ था। इट्स बीन ऑलमोस्ट 26-27 डेज। हाँ 11 अगस्त 12 अगस्त, हाँ उस दिन लिंक आई थी एंड साइन हो गया। वही हम ये डेस्परेशन है कि जो भी प्लेयर जा रहा भाई इसको ले लो, उसको ले लो। बट आपको मानू कोने जैसा प्लेयर हो, लुइस हॉल जैसा प्लेयर हो, या एडम वॉर्टन जैसा प्लेयर हो, अपॉर्चुनिटी आती है तो आप लो। अगर आप नहीं साइन करते हो तो जो हमने तकरीबन 20-25 मिनट पहले डिस्कस किया था कि आपने अपने फर्स्ट टीम पे बहुत बड़ा गैम्बल खेला है, और गैम्बल की खासियत यही होती है, या तो आपको आबाद करता है या बर्बाद करता है, देयर इज नो मिडिल वे अराउंड इट। तो आपको पता लग जाएगा सीजन के एंड में, डिड दिस गैम्बल पे ऑफ, एंड इफ दे आर एबल टू ब्रिंग इन 2 players, 1 midfielder 1 लेफ्ट बैक, भाई जितनी हमने गालियां दी है उनको, गालियां तब भी वो डिजर्व करेंगे, बिकॉज आपने टाइम खाया है, टाइम बर्बाद किया है, बट यू हैव टू हैंड इट टू देम एंड से कि ठीक है आपने अपना स्क्वाड तो कंप्लीट कर लिया। हाँ मतलब वही है एट दिस पॉइंट, सी मतलब अगर दो एस्पेक्ट से सोचा जाए राइट नाउ, अगर इफ यू थिंक अबाउट ऑल द राइवल्स अराउंड अस, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ एस्टन विला की, ठीक है, एंड चैट आप भी मुझे बताओ, मैं चैट हम लोग सबका, आप लोग का सबका चैट देख रहे हैं बाय द वे, ऐसा नहीं कि चैट नहीं देख रहे, चैट देख रहे हैं आपका, लेट्स गो यूनाइटेड बोल रहे हैं, लाइक करो स्ट्रीम दोस्तों, 175 पीपल वाचिंग राइट नाउ, प्लीज 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 फकिंग लाइक द स्ट्रीम यार, लाइक करो स्ट्रीम दोस्तों यार, कम ऑन गाइस, लाइक नहीं करोगे तो स्ट्रीम आगे से बढ़ेगी दोस्तों। एंड मैं आज वॉच अलोंग नहीं कर रहा हूँ, दोपहर का टाइम है, रात का टाइम होगा, जस्ट मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ भाई, एक दिन में 2 स्ट्रीम में पहले कर सकता था, अब नहीं कर पाऊंगा, लेट मी रिकवर बैक, मैं फिर कर लूंगा भाई, लेकिन अब आज नहीं कर पाऊंगा। बट जो स्ट्रीम देख रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच, एंड जितने भी ज्वेल्स डाल रहे हैं दोस्तों, अमेजिंग स्टफ भाई, थैंक यू सो मच, डालते रहो ऐसे ज्वेल्स। सवाल ये है राइट नाउ इज दैट एक तो उगारते की जो इंजरी है, आई थिंक इट हैज डिरेल्ड सम ऑफ द प्लान्स 100%, 100%, राइट। और एक यहाँ पे एक आ जाता है ना कि सिचुएशन इज मैन यूनाइटेड के लिए कि अब इस प्री सीजन में क्या पता लग रहा है कि एटलीस्ट हम एक कोर, हमारा जो कोर सेट ऑफ प्लेयर्स है ना, जैसे कि एम्बुमो, अमाद दियालो, दे गाइज आर लुकिंग शार्प। तो हाँ, तो शेयर एसी एक पैटर्न, एक शेयर एसी एक पाइपलाइन में क्रिएट हो रहा है पीछे। तो राइट हैंड साइड में वी आर नॉट वरीड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या इशू है राइट नाउ इज, अब डॉर्गू, जब कुनिया वापस आएगा, कुनिया वो रोल में खेलेगा, डॉर्गू को रोटेट किया जाएगा। नाउ रैशफोर्ड भी उस पाइपलाइन में है। क्या आई थिंक यूनाइटेड नॉट गोइंग फॉर अ लेफ्ट बैक, पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो डॉर्गू को उस रोल में देख रहे हैं अलॉन्ग साइड लुइस हॉल एज वेल, सॉरी आपके लूक शॉ, अगर वो लुइस हॉल के लिए ना जा पाए तो ये भी एक सिचुएशन है एट दिस पॉइंट। और एक मुझे क्या खटक रही है इस पूरे ट्रांसफर विंडो में कि हाँ मैं उस पर आ रहा था, आई लॉस्ट माई थॉट। हमारा क्लोजेस्ट राइवल इन द चैंपियंस लीग अभी कौन है? एस्टन विला है। लिवरपूल तो चलो दे आर देयर, दे हैव हैड अ फैंटास्टिक विंडो, उनके सारे प्लेयर्स जो साइन किए थे फिट वापस आ गए अंडर अ न्यू मैनेजर, दे माइट कुक। एस्टन विला, लूका डीनिये गया, दे रिप्लेस्ड लूका डीनिये ऑलरेडी विद पर्विस एस्टुपिनियन एंड रूगेरी। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि दे आर बेटर देन लूक शॉ, आई एम सेइंग एस्टुपिनियन एसी मिलान नहीं गया, वो एसी मिलान में था बट उसको ला रहे वापस।
एस्टुपिलियन को हियर वी गो। हाँ बिकॉज़ लास्ट मैंने रूबन एमरिम की देखी थी लाइनअप, तो वो भाई विंग बैक खेल रहा वो था। था, आई थिंक एस्टन विला स्टिल वर्किंग ऑन दैट डील। एक हियर वी गो आया था बट इट काइंड ऑफ डाइड डाउन, लेकिन ओके। एस्टुपिनियन एंड रूगेरी ये दोनों लेके आने की कोशिश कर रही है। उन लोग ऑलरेडी जॉ गोमेज मंजाम्बी कर चुके हैं एस्टन विला। तो हमारे जो डायरेक्ट राइवल्स है ना, might actually still might be in a better situation in the transfer window because they are also acting proactively. So यहां पे एक सिचुएशन पैदा हो रही है कि हमारे राइवल्स आसपास काम कर रहे हैं। देखो जैसे चेल्सी, चेल्सी इज गोना हैव अ 38 या 40 गेम सीजन इन द प्रीमियर लीग। कप्स में दे विल हैव लेसर गेम्स। चेल्सी अभी बेचने वाली एंजो। चेल्सी फॉर ऑल यू नो माइट एक्चुअली गो फॉर 2 more midfielders आफ्टर सेलिंग एंजो। सिटी क्योंकि जा रही है एंजो के लिए। Chelsea have signed Chavaria. Chavaria is having had a great season in La Liga. They already signed Palestra, right? उन लोग ले आए हैं इसको, दो एक्सपीरियंस साइनिंग्स लेके भी आए, राइट? सो यहाँ पे इशू चैट ये है कि द क्लब्स अराउंड अस आर एक्चुअली एक्टिंग वेरी वेरी स्विफ्टली इन द ट्रांसफर विंडो। स्पर्स अभी बैलोगन भी लेके आने वाली है। स्पर्स सविनियो की डील के लिए जा रही है। मे बी सविनियो इज नॉट ऑन द सेम क्वालिटी, बट दे आर एक्टिंग। मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्पर्स हमसे कंपीट करेगी चैंपियंस लीग के लिए, बट मुझे डर लग रहा है एस्टन विला चेल्सी के लिए कि एस्टन विला एंड चेल्सी माइट एक्चुअली टर्न अप रियली वेल। अरे ध्रुव इज इन द चैट। ध्रुव आ गया स्ट्रीम पे। लेट्स गो भाई, क्या हाल है भाई? व्हाट्स अप? ओहो बढ़िया भाई। क्या हाल है भाई? क्या हाल है मेरे हैरी अमास भाई? हैरी अमास को चश्मा पहना तो एकदम ध्रुव लगता है। मैं अपने ग्रुप पे ही डाल देता हूं ना, तभी बेच रहे हैं भाई, भाई, तो आ तभी जाएगा। बेच रहे हैं भाई। हाँ, और कमेंट्री को प्रमोट कर सारे तो कमेंट्री ही जाती है। ये नया टीम ले लिया ना अब तो, इसका टीम कमेंट्री हो चुका है अब तो। मेरे तो हर साल एक ऐसे नई टीम आएगी फिर, क्योंकि मैं हर साल एक जो ऊपर आएगी टीम उसको देखूंगा। मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, अगेन बता रहा हूँ उस टीम को, मैं बस उसको कवर कर रहा हूँ भाई। बट भाई इंटरेस्टिंग है। ऐसे मैं पढ़ रहा था ना कल कमेंट्री के बारे में, नई नई बातें पता चलती है आपको भाई कि मतलब हाँ। बहुत फनी बात है ये, मुझे नहीं पता, लोगों को पता है। मैं रील बना रहा था, मेरे एडिटर ने एडिट करके नहीं भेजी अभी तक, कि वो ना एस्टन विला को अपना राइवल मानते हैं, एस्टन विला उन्हें अपना राइवल नहीं मानता। भाई आप ये कैसी बात है भाई? ये देखिए कैसी बात है भाई। और वो एस्टन विला को अपना मेन राइवल मुझे एस्टन विला का मेन राइवल बर्मिंघम है एक्चुअली, बर्मिंघम है। हाँ, एस्टन विला को अपना मेन राइवल बर्मिंघम को मानता है, कोवेंट्री अपना मेन राइवल एस्टन विला को मानता है। अरे नेथन भी चैट में है। आज आई हैव सेंड नेथन दिस लिंक। आज एक राइवलरी है विद सनडरलैंड, वो कोई जियोग्राफिकल रीजन की वजह से कुछ नहीं है। वो पहले हुआ था उनका एक मैच जहाँ पे सनडरलैंड रेलीगेट हो सकता था, तो उन्होंने अपना किक ऑफ डिले करा दिया ब्रिस्टल सिटी के साथ, और दोनों साले ड्रॉ खेल गए और सनडरलैंड को रेलीगेट करा दिया। तो वो हेट करने लग गई सनडरलैंड भाई कोवेंट्री सिटी को। भाई क्रेजी राइवलरी है इनकी भाई। मतलब मैंने कहा कोई एक ऐसा दुश्मन ही नहीं है। पर बहुत फनी बात है यार कि आप किसी को दुश्मन मान रहे हो, दुश्मन कह रहा मैं नहीं मानता तुझे मेरा दुश्मन भाई। यार मेरे को ये सुन के ना वो याद आ गया, गोविंदा रज़ाक खान का एक सीन है, तू मेरे से लड़ेगा, कह रहा मैं तेरे से लड़ूंगा, जा मैं नहीं लड़ता। वो वाला मूवी में एपिक मूवी था भाई। यहाँ बोल रहे कि सुपर चैट आया चिरंजीव भाई, लमीन कमारा लिंक सही है, डू यू वांट हिम? बताओ शशि भाई बताएंगे, पहले ध्रुव बताएगा। लमीन कमारा क्यों चाहिए? बेगर्स कांट भी चूदर थे भाई इस टाइम पे। इस टाइम पे कोई भी चलेगा। As long as आप CDM खेल सकते हो प्लीज कम। हाँ, इट्स लाइक हम लोग मजाक नहीं उड़ाते चेल्सी का कि अच्छा तू 20 साल का है तो फुटबॉल खेल सकता है, आजा। हम लोग लाइक तू मिडफील्डर है, आजा। मैंने एक नया वो निकाला है कि अब मैं इनियोस को मैनचेस्टर यूनाइटेड से जज ही नहीं करूंगा। मैं इनियोस को जज करूंगा कि रूबन एमरिम एसी मिलान में कैसा करता है। अगर रूबन एमरिम वहां भी फेल हो गया, क्योंकि वैसी लीग में भी अगर आप ऐसे खेल रहे हो जैसे आप खेले हो, तो फिर तो भाई अपॉइंटमेंट ही इतनी ज्यादा गलत थी ना आपके अकॉर्डिंग की। एक मैनेजर को आपने उस कैलिबर का समझा जो वहां पे भी नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं जज ही नहीं हो, क्योंकि इनियोस यहाँ तो कुछ कर नहीं रहा है, तो अब मैं उसको वहां जज करूंगा जहां उन्होंने पहले कुछ कर रखा है भाई। लेट्स सी भाई। तो भाई उसका रीजन वही है ना, आप जैसे बंदे लेके आए हो अपने क्लब में, बराडा और विलकॉक्स, वो मैन सिटी से आए, वो इतना ज्यादा उन पे मैन सिटी का इन्फ्लुएंस है,
रूबन एमरिम वाज ड्यू टू रिप्लेस पेप गार्डियोला एट मैन सिटी, तो वो उस एंगल से सोच रहे थे साला इसको वहां मत जाने दो, वो वहां जाए उससे पहले इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। भाई उस चक्कर में 2 करियर खराब हो गए। दूसरा कौन है? रूबन एमरिम और अलेजांद्रो गार्नाचो गया ना भाई, एमरिम उसका तो यूरोपा लीग में ना खिलाकर एमरिम ने उसको भाई, वहीं पे शशि भाई मैं शुरू हो आपको गया था। सच बता रहा हूँ, अगर आज भी गार्नाचो फाइनल में खेला होता ना, हम साला पिछले सीजन भी यूसीएल से पहले बाहर हो गए होते, पर हम होते ठीक है, पर हम होते। गार्नाचो एक्चुअली उस दिन खेलता ना, एक्चुअली जीत गए होते अपन, बता रहा हूँ। और उसको भी पता था यार, एमरिम को भी पता था कि वो साला जीत जाता है अगर उसको खिलाता, लेकिन फिर ये था ना कि मैं उसको बाहर नहीं कर पाऊंगा, किस मुंह से बोले कि इसने जिताया है और इसको बाहर करना है। इतना सफर किया है तो भाई कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा ना भाई। अरे सिर्फ वही कर रहा है, एसी मिलान में भी सफर कर रहा है वो, बोल रहा है कि वी हैड टू, मतलब हम चेल्सी से इसलिए हारे बिकॉज़ वी हैड टू सफर, आई हैड टू मेक माय प्लेयर्स सफर। भाई अलग ही चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो है ना एकदम भाई, हम 2 बार लगातार कैसे गैसलाइट हो सकते हैं यार, टेन हाग और रूबन एमरिम। टेन हाग के पास जॉब नहीं है, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था ट्विटर पे, द ओनली रीजन रूबन एमरिम वाज एबल टू लैंड अ जॉब लाइक एसी मिलान आफ्टर यूनाइटेड बिकॉज़ ही इज गुड लुकिंग, लुक एट टेन हाग। हाँ, ही फिट्स द इटालियन बिलिंग भाई, इटालियन मैनेजर्स का एकदम साला इतनी जोर से गाली आ रही है, साला डालो ना भाई। वहां जाके बोलता है ब्लैक सूट पहन के, दिस सूट्स द ट्रेडिशन ऑफ दिस क्लब। मैंने बहन तू यहाँ पे देख ना, सर एलेक्स को देख, क्या कब फाइनल्स के पहले हम सूट्स पहनते थे। उसने ये बोला है कि यूनाइटेड में ओनली फाइनल्स में पहनना बनाते, लेकिन इटली में यहाँ पे फैशन ही इतना है कि मुझे भी पहनना पड़ रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे भाई कल्चर ही ऐसा है कि आप सूट ही पहने। अब भाई जान मैकटोमिने जाके इतना सुंदर आदमी बन गया है, उसके बाद हम इटली को तो जज नहीं कर, जो बन गया ना लेवल पे चल रहा है भाई। मैकटोमिने वो जो फ्लो कट डाल के हेयर कट, भाई जुल्फ है भाई, उसकी जुल्फ है भाई, लटे निकल रही हैं। हॉलैंड के फ्रेकल्स गायब हो गए, हॉलैंड के फ्रेकल्स गायब हो गए दोस्तों, मैं क्या बताऊं मैं दोस्तों यहाँ पे। लेकिन थैंक्स फॉर द सुपर चैट चिरंजीव भाई। लमीन कमारा के लिंक्स बहुत जगह से आ रहे हैं, वो आएंगे। यूनाइटेड 1000 प्लेयर से लिंक्ड होगी एक बार प्रॉपर लिंक कल, लेकिन जैसे कि बेन जेकब्स ने एक बढ़िया सा लिंक डाला एलेक्स क्रुक के साथ कि वो जो लुइस केली का न्यूज एकदम परफेक्ट था, वो आया था लिंक उसके, और सडनली फटाफट आर्सेनल की एडमिन ने विद इन 10 मिनट्स वीडियो डाल दी माइल्स लुइस केली की। भाई लुइस केली को तो उन्होंने चेल्सी को भी ऑफर कर दिया, चेल्सी ले ही लेगा भाई ना, लेकिन लुइस केली जाएगा नहीं कहीं पे, लुइस केली जाएगा भाई, उसको गेम टाइम चाहिए। लेकिन उसको आर्टेटा लास्ट के लेग्स में उसको बैक किया था, तो आर्सेनल फैन बेस में एक कंसेंसस है लेकिन कि उसको एक मिडफील्ड जनरल जैसे देखा जा रहा है। मेरिनो के इंजरी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, गिमारेज ले लिया ना, डेक्लन राइस अभी इंजर्ड है ना काफी। अरे तो भी भाई डेक्लन राइस वापस आ गया, जुबामेंडी, वो मरीनो सब उससे ऊपर है भाई लुइस केली से। नहीं, वो एक आर्गुमेंट है, मैंने वो आर्गुमेंट पेश किया था, लेकिन आर्सेनल फैन बेस ये बोल रहे, ऑब्वियसली उन लोग नहीं चाहेंगे प्लेयर्स में, लेकिन मैं कुछ आर्सेनल फैन से बात की, उन लोग बोले कि यस उसको लास्ट सीजन उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, बट लास्ट लेग में मैंने भी देखा है जैसे आर्टेटा ने उसको यूज किया था राइट एट द एंड ऑफ द सीजन, उसको स्टार्ट किया कैलाफियोरी, वो लिंकअप बढ़िया लग रहा था उनका, वो आर्सेनल बेटर खेलने लगी थी। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये लुइस केली का सीजन होगा एंड आर्टेटा शायद कन्विंस कर रहा है, लेकिन मैंने वही एक चीज बोली थी, द लास्ट टाइम एन आर्सेनल टैलेंट हैड अ मम एज हिज एजेंट, वी नो ऑल व्हाट हैपेंड भाई दोस्तों। एडन हेवन उसकी मम्मी एजेंट थी भाई, तो ब्रिलियंट इंटरव्यू है, इंटरव्यू बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू उसका पैडक के साथ, ब्यूटीफुल इंटरव्यू, मजा आ गया वो देख के, बहुत बढ़िया। तेरे को रिमोटली लग रहा है ध्रुव की लुइस के लिए आएगा यूनाइटेड? रिमोटली भाई मुझे इतना पता है लुइस आएगा। हाँ। एक लुइस तो आ रहा है, आइदर पन्ना या फिर हॉल या फिर कोई तो लुइस आएगा भाई यहाँ पे, एक लुइस तो आएगा, एक लुइस तो आएगा, लुइस हॉल आएगा। Yeah, बोल Rashford is back. I wish Garnacho, Onana, Sanchez can be back as well and make Man United a super team once again. साले तुम हमारे ग्रुप में आओ गैरी भाई, तुम हमारे ग्रुप में आओ, तुम जितना ट्रोल करते हो ना उससे ज्यादा हम करते हैं यूनाइटेड को। पॉगबा, मेम्फिस डेपाय बेच चुके हम पिछले 24 घंटे में, कि ले आओ आपका सीडीएम स्ट्राइकर सब सॉर्ट हो जाएगा। यस यहाँ बोल रहे हैं कि as by this window summarizes, Ineos just wants tap-in deals with no competition. Maybe Pogba the marquee signing that. कल ही आपने बोला था, कल ही चैट में हम लोग बोल रहे थे पॉगबा ही है, ठीक है, पॉगबा ही है। यहाँ पे बोल रहे हैं अरे गैरी भाई 6 महीने से मेंबर है दोस्तों, ऑलरेडी क्लोज टू 190 पीपल वाचिंग राइट नाउ, प्लीज लाइक द स्ट्रीम एंड प्लीज सब्सक्राइब। लेट मी स्क्रीनशॉट दिस एंड सेंड इट टू नेथन। हाँ
अच्छा, we missed a great opportunity on Garner. If we acted quickly, we would have got him for free. यार ऐसे तो हमने कितनी मिस्ड बहुत खरी चीज अपॉर्चुनिटी है। कर दी है, हम कुछ कह ही नहीं सकते भाई। लेकिन मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ राइट नाउ। एक दूसरा पहलू है कि यस हम प्राइमरी टारगेट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पहलू ये है कि वी साइन ओरोस्को, टिनन थॉमसन, अभी लुइस पेज के लिए जा रहे हैं, एंड हमारे एकेडमी से प्लेयर्स आ रहे हैं, शेल इसी अब धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहा है। डू यू थिंक एट दिस पॉइंट कि विवेल और विलकॉक्स मिल के, हम विलकॉक्स को 1000 गालियां दे सकते हैं, बट विलकॉक्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द एडन एवन साइनिंग। विवेल दोनों मिलके साइनिंग किए थे, तो उसको मैं क्रेडिट दूंगा। टिनन थॉमसन भी उसी की साइनिंग है। थॉमसन भी राइट, तो वहां क्रेडिट। डू यू थिंक एक दूसरा साइड है कि यहाँ पे हम एक यंग टैलेंट पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं कि जैसी हमारी डेट सिचुएशन है, कुछ यंग प्लेयर्स अगर आ रहे हैं, इफ दे आर गुड इनफ इंटीग्रेटेड इनटू द स्टार्टिंग 11, if they are not, loan them out, get them like sell on clauses, right to match clauses, and एक revenue generation pipeline भी create होनी जरूरी है, जैसे चेल्सी क्रिएट कर रही है। Do you think this is the right approach? क्योंकि मेरे ट्विटर पे बहुत लोग आके ये मुझे बोल रहे हैं कि this is not how big clubs operate, but I tell them that we are not in a big club situation in terms of the revenue and the finances because we are in huge debt. आप लोग दोनों को क्या लगता है कि ये अप्रोच सही है एट दिस पॉइंट, जो हम यंग प्लेयर्स इतने साइन कर रहे हैं एट दिस पॉइंट? क्या हम उनको चांस दे भी पाएंगे? ध्रुव पहले जा। चांस देना ना देना तो वो तो उन पे है ना कि हाउ दे परफॉर्म एट द एकेडमी, एज सिंपल एज दैट। उनको ऑफ कोर्स अगर इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल एट द एकेडमी दे वुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी, बट द थिंग इज हु विल बी द मैनेजर गिविंग देम दैट अपॉर्चुनिटी। अब क्योंकि जस्ट बिकॉज़ रूबन एमरिम गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू चीडो ओबी मार्टिन, अब वो बेचारा वापस गया है। Right. He has to perform again, prove his mantle again and come. अगर वही बंदा मेरे हिसाब से माइकल कैरिक के अंडर आया होता, right, he would have been a better integrated player because रूबन एमरिम का सिस्टम हमारे मेन प्लेयरों को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब वही है कि अब जो ये टाइनन थॉमसन वगैरह लिया है आपने, these players fit the profile माइकल कैरिक wants to play. At the same time अब आपने जो डियागो लियोन लिया था वो नहीं करता है इस वाली प्रोफाइल में फिट। हैरी अमाश को आप बेचना चाह रहे हो, जबकि जो माइकल कैरिक की यूथ टीम हमने देखी है, दैट हैज प्लेड बेटर देन द मेन टीम इन प्री सीजन। वी हैव टू एग्री ऑन दैट कि भाई जब भी वो दिखे द एनर्जी वाज देयर, दे हैड अ प्लान। और अब आप मेरे को ये बोल रहे हो कि आपका वो जो एक तो कैमिसन राइट बैक है वो अच्छा खेल रहा है, उसको लोन करने वाला, आप उसको सोचोगे कि वो थर्ड राइट बैक होना चाहिए, वहां पे सुनाई दे रहा है कि नहीं भाई इसको तो हम लोन कर देंगे, हैरी अमाश को हम बेच देंगे। चलो मेरे को लगता है यू विल लूज आउट ऑन 1 or 2 प्लेयर्स लाइक हैरी अमाश बिकॉज यू नीड, कि आप ये 6 मिलियन बेचोगे, आप पे आएगा कुछ अपना 30 मिलियन तक का वो आ जाएगा आप पे खर्च करने की पावर वगैरह व्हाटएवर, बट ये कुछ प्लेयर्स बिकेंगे। बट एट द सेम टाइम आप किस मैनेजर के अंडर इन प्लेयर, अब आप कैरिक के हिसाब से अगर इन प्लेयरों को लाए, कल को आपका मैनेजर कोई और है, फिर वो उनको मौका देना चाहता है नहीं देना चाहता है, वो वाली बात आ जाती है। अब जैसे शेल एसी है, अगर इफ दिस इज नॉट द सीजन टू इंटीग्रेट हिम प्रॉपर्ली, मेरे को नहीं लगता कि भाई वो फिर बिक जाएगा वो अगले 2 साल में कहीं। मुझे लग रहा है शेल एसी इंटीग्रेट होगी, क्योंकि लास्ट सीजन हम लोग कुछ मिनट्स पे देखे थे ऑलरेडी, बिफोर ही गॉट द रेड कार्ड वो सस्पेंड हो गया था 3 गेम के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी आ रहा था टीम पे। एंड मुझे ये सिचुएशन अच्छी लग रही है, क्योंकि अगर एम्बुमो तो ऑब्वियसली अमाद के पहले स्टार्ट करेगा, लेकिन अमाद विल बी ऑन द टो, क्योंकि अमाद अगर परफॉर्म नहीं किया ना, शेल एसी उसके पीछे बैठा हुआ है कि मैं आके स्टार्ट करूंगा तेरे हेड, क्योंकि शेल एसी भाई बट वही बात है ना, राइट नाउ दे आर, जो उसको खिलाया है उसको नंबर 10 खिलाया है, क्योंकि इन लोगों को भी माउंट पे भरोसा नहीं है, इनको पता है माउंट नहीं टिकेगा ज्यादा लंबा। सो ब्रूनो को मतलब अगर ब्रूनो 1-2 गेम के लिए बिठाना भी है तो यू हैव टू प्ले शेल एसी या जैसे भी वो करना चाहते हैं उसको शिफ्ट, वो करंटली उसको नंबर 10 देखते हैं। कल का नया मैनेजर आके कहेगा नहीं भाई मेरे को तो एंथनी साइनिंग चाहिए, जैसे एंथनी वाला था, तो शेल एसी इज द परफेक्ट, वो एंथनी वाला मिक्सचर है, उस पे वो फ्लेयर है, सिंपल सी बात है। तो अब वो आप उसको कैसे खिलाते हो, कैसे कौन खेलता है, वो वाली बात आ जाती है। बट शेल एसी जो कुछ प्लेयर्स आप लाए हो, जैसे टाइनन थॉमसन लाए हो, शेल एसी है, ये टाइनन थॉमसन को अगर आप बिठा के उसको वेट कराओगे ना कि 221 ही खेल, उसके बाद टीम में आप गिव हिम, जैसे मार्शल वगैरह को मौका दिया गया था, उसको पहले आप 1-2 मौके दो, अगर वो परफॉर्म कर रहा है इंटीग्रेट हिम इनटू द फर्स्ट टीम की भाई तू खेल कारवाओ कप वगैरह में, क्योंकि आप लाए उसके लिए हो ना। जैसे आपने हेवन को लाके आपने खिलाया था बेसिकली, क्योंकि अब हम देख रहे हैं यार 15-16 साल के बच्चे रेडी आ रहे हैं, फ्रॉम द अकेडमी ही रेडी आ रहे हैं,
तो अब आप जब ये वाली आर्ग्यूमेंट रखते हो ना कि हम 22-23 साल तक इन लोगों को डेवलप करेंगे फिर फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट कर देंगे, वो एज ही कट हो गई है अब। उस एज का स्टैंडर्ड कट हो गया है। तो अब आपको भी देखना पड़ेगा कौन सा प्लेयर 18-19 साल तक इस टीम में फिट होने लायक हो गया है। उसके कुछ प्लेयर होते हैं जो मैच्योर लेट करते हैं, बट वो डिफरेंट लीग्स में जाके मैच्योर करके आते हैं। करेक्ट। और कुछ लोग ऑलरेडी दे आर गुड एनफ टू प्ले एनफ, दे आर गुड एनफ, दे आर ओल्ड एनफ। एक टीम में मैच्योर नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि जैसे योकोरेस था, योकोरेस डिडंट परफॉर्म एट स्वानसी और लीड्स वेयरएवर ही वाज एट, आई कांट रिमेंबर नाउ, बट वो वहां नहीं परफॉर्म कर पाया। अब भाई लेकिन अब वो आर्सेनल के लिए खेल रहा है कि बट ही वेंट टू अ वेरी डिफरेंट लीग, परफॉर्म्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, बिकेम द प्लेयर ही इज। So either you loan him out, sell them out on a buyback clause, आपको वो डिसीजन जल्दी लेने पड़ेंगे। As simple as that. अब जैसे आपका सेकू कोने है, he is 20, उसको लोजान बेच दिया अभी। मेरे को नहीं लगता कि आप 2 साल तक उसको और इंटीग्रेट करोगे। अगर आप 22 साल पे ये सोच रहे हो कि सेकू कोने शायद इंटीग्रेट होगा, that's a bad investment already। आप उसको कहीं बेचो बायबैक क्लॉज के साथ कि वो प्लेयर बन गया तो वो वापस आए, सिंपल सी बात है। वही है at this point। and Shashi bhai, what do you think about this whole situation with signing youngsters? Do you like टिनन थॉमसन को साइन किया गया बिकॉज आई थिंक ही वाज रेडी इन द स्पर्स सेटअप कि वो इंटीग्रेट हो जाए, उसको ग्रैब किया। यूनाइटेड पे ऑलरेडी रैशफोर्ड, कूनिया, डॉर्गू है। अब उस पाइपलाइन में टिनन थॉमसन चौथा जुड़ जाता है, तो आई डोंट थिंक सो उसको एनफ अपॉर्चुनिटी टिनन थॉमसन को मिलने वाली है। डू यू रियली थिंक कि टिनन थॉमसन जैसे कि ओरोस्को वगैरह, ओरोस्को तो खेलेगा अंडर 23, अंडर 21, ये जो मैंने पाइपलाइन की जो बात कही है, ये पाइपलाइन का फ्यूचर आप क्या देखते हो एट दिस पॉइंट एक एक प्लेयर का, जैसे हम लोग बात किए टिनन थॉमसन, ओरोस्को। पहले तो बहुत अच्छी चीज है कि पाइपलाइन बन रही है। राइट। यूनाइटेड की एकेडमी मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादा ओवर हाइप्ड है बिकॉज ऑफ द क्लास ऑफ 92। क्लास ऑफ 92 के बाद यूनाइटेड ने रैशफोर्ड, लिंगार्ड जैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने, ठीक है, रैशफोर्ड ने अपने टाइम पे यूनाइटेड को संभाला है, ही वाज द फेस ऑफ द क्लब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। रैशफोर्ड के अलावा कोई ऐसा एकेडमी से बंदा नहीं आया जिसने आपके फर्स्ट टीम को यहाँ से यहाँ लेके चला गया हो। उसके लिए आपको पाइपलाइन बनानी पड़ती है, और थैंकफुली आज हम उस पोजीशन में हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि आपके कैमसन, जिम थ्वाइट्स और आपका ये ओरोस्को ऐड हुआ है, शेलेसी वहां पे है, टिनन थॉमसन है, चीडो वो भी होगा शायद, डैन गॉर है शायद। आपने एटलीस्ट वो पोटेंशियल अब डेवलप कर लिया है कि अगर आपने इनको 4-5, क्योंकि हमारी सेलिंग कैपेबिलिटी नहीं है, अगर हम इनको 5 से 10 मिलियन में ही बेचते हैं तो यू आर जनरेटिंग सेल्स क्लोज टू 100 मिलियन पाउंड्स, अगर ये सारे के सारे मिसफिट्स हैं और स्क्वाड में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो इनका काम सिर्फ फर्स्ट टीम पे नहीं काम करना है ना, आपको एकेडमी पैरेलली बिल्ड करनी है। और इन्होंने क्या किया है पिछले 18 महीने में, दे हैव गॉन आउट, they have fought against likes of Liverpool, Arsenal and Man City and got the best young players who are in the country, who are in England। तो इन्होंने लिवरपूल से भी एक बंदा साइन किया है, एक और करने वाले हैं, मैन सिटी से एक प्लेयर लेके आए हैं, अभी आप चार प्लेयर्स लेके आए थे अंडर 16s में। लुइस पेज की बात करो जो कि लेस्टर के ऑलरेडी फर्स्ट टीम में 21 मैचेस खेल चुका है, भले चैंपियनशिप में, बट वो उसको फर्स्ट टीम का एक्सपीरियंस है एट द एज ऑफ 18। सो आप लाख गालियां दे दो इनियोस को, बट उनका जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इस क्लब को लेके कि आप यंगस्टर्स की ऐसी पाइपलाइन बनाओ। उसने फॉर द सेक ऑफ सेइंग नहीं बोला था बराडा ने कि आई एम नॉट willing to spend 100 million on Moises Caicedo, rather I would go out and buy the next Moises Caicedo। आप 8-10 प्लेयर्स ऐसे साइन करोगे, आपको सिर्फ 2 प्लेयर्स चाहिए और आपका फर्स्ट टीम यहां से वहां पहुंच जाएगा। करेक्ट। बाकियों को आप इंटीग्रेट करो, होते हैं ठीक है, नहीं होते तो आप लोन करके बेच के आगे बढ़ो। भाई लाला भाई पूरा स्पैम कर दे डब्ल्यू यार। look at him भाई, look at him भाई यहाँ पे भाई। जिसका मैंने चैट थोड़ा मिस कर दिया, मैं थोड़ा चैट एक करके ले रहा हूँ, बट नहीं सही कहा। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, आप लुइस पेज का जो बात की है, राइट, एंड ध्रुव भी इफ यू वांट टू आंसर एज वेल। लुइस पेज ऑलरेडी इंप्रेसिव लग रहा है लेस्टर में, एंड ऑलरेडी चैंपियनशिप में कोई बंदा अगर टेस्टेड है तो आई स्टिल बिलीव कि दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रीमियर लीग। मैं ये हमेशा बिलीव करता हूँ क्योंकि चैंपियनशिप में आप फिजिकली टेस्ट होते हो एंड द अमाउंट ऑफ गेम्स यू प्ले एज वेल। डू यू थिंक लुइस पेज को लाने का ये है राइट नाउ दैट पॉसिबली ही लुक्स मोर रेडी देन द फ्लेचर ब्रदर्स? बट अगर आप उसको अगर आप एक विंडो में 2 18 साल के लड़के को लाके फर्स्ट टीम साइनिंग की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चिंदी चोरी है भाई, टू बी
टू बी वेरी फेयर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप मेरे को लुइस पेज लाके बोलते हो लो ये आपका तीसरा मिडफील्डर साइनिंग, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट, टैक्टिकल सुसाइड, हाँ आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट, क्योंकि मैंने लुइस पेज की फिजिकलिटी देखी है भाई, वो बहुत अच्छा प्लेयर होगा चैंपियनशिप में, बट ही लुक्स अ बिट फ्रेजाइल फॉर अ प्रीमियर लीग कंपटीशन टू बी प्लेइंग अलोंगसाइड सैंटोस एंड ब्रूनो। तो ठीक है, आप एकेडमी पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहे हो, बहुत अच्छा है, हो सकता है वो आज 18 साल का है, बाय द टाइम ही गेट्स टू 20 इयर्स ओल्ड ही कुड बी योर स्टार्टिंग सीडीएम ऑप्शन अलोंगसाइड कोबी मैनू एंड ब्रूनो फर्नांडिस या फिर टिलेमेंस। बट हाँ, एक विंडो में 18 साल, आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट अप्रोच। हाँ, आप फ्यूचर देखो, एकेडमी देखो, सॉर्ट करने की जरूरत है। जितना ओवर हाइप्ड है हमारा एकेडमी, उस लेवल के प्लेयर्स नहीं निकल के आते हैं फर्स्ट टीम में। सो अगर आप पाइपलाइन बना रहे हो कि आपके पास 7, 8, 9 ऑप्शंस रेडिली अवेलेबल हैं, कल की डेट में अगर माउंट इंजर्ड होता है, टिलेमेंस इंजर्ड होता है, तो आप स्क्वाड से जिम थ्वाइट्स को ला सकते हो, लुइस पेज को ला सकते हो अगर वो आया है, और ऑर्स्को को ला सकते हो, टेनन थॉमसन को ला सकते हो। सो दीज आर गुड टू हैव ऑप्शंस, दे कैन नॉट बी योर प्राइमरी ऑप्शंस टू फॉल बैक ऑन। बट कभी उनको प्राइमरी बनाने के लिए उनको एनफ गेम्स और मिनट्स देंगे। अभी मेरा ये पॉइंट है कि इफ, जैसे ध्रुव ने बोला उस टाइम कि इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर एज वेल, कि कौन उनको मौका देगा, राइट? अब कैरिक एक ऐसा मैनेजर लग रहा है कि यस ही कैन एक्चुअली, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द डीएनए ऑफ द क्लब, ही अंडरस्टैंड्स द कल्चर ऑफ द क्लब। क्योंकि एक वो जानना भी बहुत जरूरी है कि जब आपको इवन यंग प्लेयर्स अगर एक स्ट्रिंग ऑफ रन ऑफ गेम्स उनको नहीं मिलेंगे, वी विल नेवर नो द पोटेंशियल। जैसे कि जेम्स गार्नर की एग्जांपल बहुत लोग चैट में देते हैं, वी कुड नेवर नो अबाउट द पोटेंशियल ऑफ जेम्स गार्नर, क्योंकि हम जेम्स गार्नर ऑब्वियसली इंजरीज हुई, बट वी नेवर गेव हिम अ रन ऑफ गेम्स की फाइनली वो प्रूव हो। तो हमारे यहाँ पे अब 2 चॉइस आ जाती हैं, या फिर जो क्लास ऑफ 26 हम लोग चैट में बात करते हैं, मजाक करते रहते हैं, या ये अप्रोच अगर जा रहे हैं तो आइदर ये यंग प्लेयर्स को मौका दो, बट देन यू हैव टू आल्सो एज फैंस स्वॉलो द पिल कि पॉसिबली हमको सर्टेन गेम्स में वो रिजल्ट्स ना मिले, एंड इज दैट्स द अप्रोच वी गोना टेक। Is the fan base really ready to give these youngsters even a chance at the slightest possibility of having कि हम लोग पॉइंट्स लूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक पिवटल पोजीशन पे क्या है पता है, हमारी यंगस्टर्स पाइपलाइन भी हमें क्रिएट करनी है, हम यंगस्टर्स को चांस देके ये भी अश्योर करना है कि यस जेम्स गार्नर वाली मिस्टेक ना हो, बट हमें और एक चैंपियंस लीग कैंपेन सिक्योर करनी है। ऐश भाई, उसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्लब को एज अ प्रोजेक्ट ट्रीट करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को ट्रीट करते हो, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड और नीस को साथ में ट्रीट करते हो। आप जा रहे हो शशि भाई? ठीक है, सी यू शशि भाई। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूथ प्लेयर्स को नीस भेजते हो लोन पे, हाँ, और देखते हो वो वहां कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जो नीस लीग 1 में परफॉर्म कर पा रहा है, आप उसको वापस लाते हो इस टीम में। जो चेल्सी स्ट्रासबर्ग के साथ करता है बेसिकली, आप वो करते हो। अंडर सैंटोस को उन्होंने इंटीग्रेट किया, जैसे स्ट्रासबर्ग में बढ़िया सीजन। मैनचेस्टर यूनाइटेड को मत खरीदो ना सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड से, आप वो नीस से खरीदो। बाद में अगर आपको बेचना हो, आप बेच देना वो यूनाइटेड को। आपको दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, आपको 2 क्लब साथ में चलाने पड़ेंगे। आजकल हर टीम सिस्टर क्लब चलाती है अपना, सिंपल सी बात है। यू हैव टू मेक दैट एडजस्टमेंट कि भाई आप इन यूथ प्लेयर्स का करने गए वाले हो। आप ये नहीं कर सकते कि ये डैरेन फ्लेचर के अंडर खेलते रहें। हाँ, अंडर 23 बार-बार नहीं खेलने चाहिए, दे शुड बी गो एंड टेस्टेड। तो अब चीडो बी मार्टिन शुड बी इन नीस फॉर मी कि भाई वो वहां बंदा जाके खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब वो आपको करना पड़ेगा, पर वो ये मैनेजमेंट वो करने को तैयार नहीं है। ये मैनेजमेंट नीस और यूनाइटेड को अलग प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट। अरे इनसे बहन टोडीबो साइन नहीं हुआ नीस से यूनाइटेड में उस टाइम पे। उस टाइम पे टोडीबो का था। टोडीबो वाज अ प्लेयर जो हर टीम को चाहिए था। चलो वो वेस्ट हैम में गया, फ्लॉप हो गया, ड्रॉप ऑफ आया, यस, दैट इज फाइन। बट उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर सीजन पे यूनाइटेड नीडेड अ सेंटर बैक। आपको टोडीबो साइन कर लेना चाहिए था। कुछ नहीं होता। मैं आपको आज भाई, यूरो और टोडीबो ना करंटली सेम लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यूरो की सीलिंग बहुत हाई है, मैं मानता हूं, पर अगर वो 1 साल में और परफॉर्म नहीं करा, यू विल हैव टू कैश आउट ऑन हिम। आप उसको 7-8 साल नहीं दे सकते यहाँ पे फेल होने के, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत साइनिंग, जैसे इस बार इन्होंने साइनिंग करी है ना, द ओनली गुड थिंग इज दे हैव फिल्ड द गैप्स विद द प्लेयर जो कि नॉट दैट ग्रेट इन वैल्यू। नाउ यू नीड 1-2 मार्की साइनिंग्स आपको चाहिए जो आपका सीजन आगे बढ़ाए। एटलीस्ट आपने वो गैप फिल करे।
जो लास्ट टाइम लिवरपूल की गलती हुई थी वो था कि उन्होंने मार्की साइनिंग्स उठा ली थी और उन्होंने गैप फिल नहीं करे। इस बार जो हम गलती कर रहे हैं कि हमने गैप फिल कर दिया, हमने मार्की साइनिंग नहीं उठाई है, तो ये टीम का लेवल कौन बढ़ाएगा? यू कांट टेल मी कि एंड्रे सैंटोस और यूरी टिलमेंस आपके बहन जो पिवट बन के हर मैच में उतर नहीं नहीं भाई, 70 गेम है भाई। टिलेमंस की इंजरी हिस्ट्री भी उतनी नहीं है कि भाई 70 गेम सस्टेन कर पाए। भाई यू डोंट हैव उगाटे, यू हैव कोबी माइनू, 3 प्लेयर में आप कैसे खेलोगे 70 गेम? मेसन माउंट आपको लग रहा है वो डीप खेलेगा? उसके बाद आपके पास कौन है? हु इज देयर? देयर इज लिटरली नो वन भाई। मैं एक दो चीजों से जो मैंने प्री सीजन में देखी है ना, मेरे को जो देख के अच्छा लगा है कि हैरी मैगवायर का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आमिर में है हमारे पास, जो हमारा डैनियल आर्मर अच्छा लग रहा है, ही इज गुड। और मैगवायर उसको खुद अप्रिशिएट किया है बंदे को। हाँ, ही इज लुकिंग गुड भाई। तो एटलीस्ट आर्मर लुक्स गुड। कामिसन है, चलो अब अमास तो जा रहा है, डोंट नो अबाउट दैट। कामिसन को होने से एटलीस्ट मुझे लग रहा है वो रुक जाएगा अमास। यार वो जो भी है, डैलो या फिर ये इधर भी खेल सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ पर्सन हु कैन एक्चुअली मतलब आपके लिए वहां पे खेल सकता है। डिफेंसिवली मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा, हमारे पास डिसेंट प्लेयर्स हैं जो निकल के आ रहे हैं। प्रीमियर लीग वी विल बी ओके टिल वी हैव प्लेयर्स लाइक कुनिया एंड एम्ब्यूमो टू आउटस्कोर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी आपको एक नंबर 9 चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जोशुआ ज़र्गज़ी कैन नॉट बी योर सेकंड नंबर 9 भाई इन दिस टीम। उसको बेच भी नहीं पाएंगे, लोन भी नहीं कर पा रहे हम लोग यार। वो ही इज नॉट इवन अ प्लेयर जो आप कारबाओ कप में स्टार्ट करोगे, उसकी ये लीग ही नहीं है, उसकी ये लीग है ही नहीं। मूव ही नहीं कर पाता बंदा भाई, उसको मूवमेंट ही इज नॉट, उस बंदे की ये लीग ही नहीं है। तो आपको उसका रिप्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। एंड भाई आप चीडो उबी मार्टिन, या तो आप उसको रखो अपना सेकंड, मेरे को नहीं मतलब, यू हैव टू गिव समवन द अपॉर्चुनिटी, एज सिंपल एज दैट भाई। आप ये नहीं कर सकते कि मतलब डिफेंसिवली जस्ट बिकॉज हमारी यूथ अकेडमी ठीक करके गई है इस बार, पर उतना ही अगर आप देखो भाई, ईथन विलियम्स वगैरह वर नॉट दैट शार्प ऑन द विंग्स। शेलेसी के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया है। जेजे गैब्रियल को आप शायद इस बार डेब्यू दे दो, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द टीम दिस सीजन फॉर श्योर। गैब्रियल तो चांस ही नहीं है, अभी भी अंडर 23 अंडर 18 खेलेगा, वो उसको लोन करेंगे। मैं क्या आप सोचते हो कि ब्रायन एम्ब्यूमो कब तक आपका सेकंड स्ट्राइकर बन के खेलेगा? उस ब्रायन एम्ब्यूमो तो उसको हर जगह डाल रहे हैं, स्ट्राइकर डाल रहे हैं उसको, लेफ्ट विंग में डाल रहे हैं उसको अपने डेजिग्नेटेड पोजीशन में खेलने मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज यूनाइटेड ने बैकअप स्ट्राइकर अभी साइन नहीं किया है भाई। वो फिर उस बंदे की फॉर्म भी गिर गई ना उस वजह से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, क्योंकि सब वो सोचते हैं कि एफकॉन की वजह से फॉर्म गिरी है। नहीं, हाँ, स्ट्राइकर खेल खेल के वो बंदा थक गया है कि भाई मैं कहाँ खेल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अब आप मथायस कूनिया को आप रखने वाले हो यहाँ पे। देखो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है अगर मार्कस राशफोर्ड आप कंफर्म कर देते हो कि ये रुक रहा है, कि आप इसको भी एज अ सेकंड स्ट्राइकर ट्रीट करने वाले हो ना, या विंगर ट्रीट कर रहे हो। टाइनन थॉमसन को आप एज अ विंगर ला रहे हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। जो लोग बात कर रहे थे ना कि वी शुड गेट फरहान टोरेस एज द सेकंड स्ट्राइकर, भाई मार्कस रैशफोर्ड अगर आपका सेकंड स्ट्राइकर है, सेम ही चीज करता है, सेम ही आउटपुट, सेम नंबर्स देगा वो, सेम ही आउटपुट वो सेम ही करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ विंगर who is playing as a striker who has played in a certain Manchester पहले भी, मतलब फेरन टोरेस भी सिटी में खेला था सेम विंगर स्ट्राइकर वाली पोजीशन पे, was not that good। रैशफोर्ड फिर भी बेटर कर देगा। अब वो है कि how does Marcus Rashford परफॉर्म इन दिस, बिकॉज एक ये भी है, अब लोग ये भी है ना, डोरगू क्या करता है इसमें? नेथन इज ऑन द डोरगू बोलते ही भाई नेथन आ गया। डोरगू की बात करते हैं, एंड वी आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट कि अगर रैशफोर्ड अभी, इफ रैशफोर्ड इज वन ऑफ द विंगर ऑप्शंस, वी हैव कूनिया, डोरगू, रैशफोर्ड, टिनन थॉमसन. Now we signed Tinnen Thompson. What is going to happen to that guy? What is going to happen to Rashford? If Carrick is preferring Mbumo as a striker, will Rashford start in the winger position? If Rashford starts in the winger position, what about Tinnen Thompson? Why did we then sign him? There's so much confusion going on there. What's your thoughts, Nathan, on this whole talent pipeline situation? Because you have been very vocal about the whole Garner situation, that we cannot make the mistakes of Garner we made previously. So we have two pathways, right? I've decided. I've already decided. Next week I'm going to make a video about how I feel about Manchester United in general. Yeah. I'll only say this to all the people who preach positivity, blindly. Hopefully you all will learn your lesson this year. I'm going to be very clear about one thing. When we finished 15th, the excuses were, we finished 15th, we can't get any players. Today we finished 3rd. We're going to finish, and before we finish in Champions League spots,
journalists, fans, content creator, everyone said, man, we need to finish in Champions League to get the players we want. We did that. We have got nothing. Yep. Every time the narrative is constantly changed just to make sure everybody gets gets their views and enjoy their moment in the sun. Once we finished in Champions League spots, we were going after Elliot Anderson, Matheus Fernandes, and Sandro Tonali. Very we openly, were in for Sandro Tonali. Glad you accepted. Very blatantly. Yeah. When we didn't get them, we changed the narrative and said we are doing under the radar signings. This is our new transfer strategy. It is good we don't know who Ineos is going for, which is completely incorrect because we knew what Ineos was going for. They failed, and now they were going hiding to sign the players. Yeah. So the thing is, we've got nobody. We've got Chelsea's 5th central midfielder. We've bought a 29-year-old on a release clause, and we got a goalkeeper that's not even better than the goalkeeper we just sold to Middlesbrough. Yeah. We have done nothing good, but everyone will just pretend and talk about momentum and talk about these are good signings when none of these signings are anybody we wanted. We weren't even looking at these players this season. We got them. So in the name of positivity and hope, and everyone riding Ineos's dick for the last 2 years, everyone has said this. I have a simple question to ask you. You think these people have not lied to us? I've been saying they've been lying to us from the very beginning. 100%. And people have said, no, you misinterpreted. One simple question I'm going to ask you. Did Omar Barada not say we are going to get a marquee signing? Best in class. When he said we are going to do... No, did he not say we're going to get one marquee signing last year? He did. And Nathan, I have been also saying since the start of this transfer window, and you have heard me. Let all United fans please accept that we failed in the first leg of the transfer window. Maybe Andre Santos was an data-driven signing. But that Tielemans thing was absolutely opportunistic because we fucked up Matheus Fernandes. We always were shown the dream of Elliot Anderson. And we missed out on Tonali as well. Because see, people might think and tell me whatever they can. Fabrizio in March, a lot of the bigger journalists had told clearly United were in for Tonali. Tonali is high on the list of priorities. We could not make the deal. That does not mean that they were not on the hindsight and part of the whole situation. You're right. The promises that were made are absolutely nowhere near the reality of what we have right now. Right? And even on the left back situation right now, if United were actually prioritizing left back, why are we waiting till August 12th right now? And they had money for Semenyo as well, by the way, last season. Why there's so much deal? What is the whole situation with the left back, Nathan? What do you think about this whole? Have we messed up in terms of the whole transfer strategy tonight? Chat is also saying that they're disappointed right now. Nathan behave don't abuse bol rahe. I don't know. Nathan is on mute. I think Nathan is on mute. He's going to come back. I'm going to take some chat as well. Why can't a Spanish club be owned by businessmen rather than socios? मैं इसका क्या ही आंसर दूं? यहाँ दो बोल रहे हैं, लाला बोल रहे हैं कि I think United has a great squad. See, we have a great squad for a 38 game season, भाई 70 के लिए नहीं है. We don't have a great squad. We have so many gaps to fill. कहाँ से great squad है भाई लाला? I mean, I understand कि what you're saying. We do not have a great squad, yaar. And Nathan, let me know what you think about this. Wait 1 minute. Abhijit said you were supporting Bummerim because he drew against Wolves. I said I'd tolerate him until the Wolves game. I did it publicly, by the way. Yeah. And also, the only reason everyone else said they would give him a chance except me, even if we did draw. So, and also, where did you hear me support them, Abhijit? Actually, I'm very disappointed in you. You clearly don't watch the videos because everyone knows I didn't support him at all for a very long period of time. Very disappointed you said that because you're the only person who's actually said that. Everyone has said the opposite for me. Everyone has said that I have been negative and not. I remember we were on the stream, right? You asked for a sack straight away. I asked for a sack. I said if he doesn't beat Wolves, sack him. Yeah. We were on the stream. I remember this. Yes, exactly. I asked for a sack. Right? I mean, I don't know what people listen to, man. They listen to whatever they want. But anyway, my point is,
that we have been lied to constantly. Everyone was talking about give him a chance, give him a chance. They have a strategy. The strategy has been There's no changing strategy. again and again and again and again, and people just pretend like it doesn't exist. Yeah. So you know what? I'm going to sum it up like this. Yeah. There was a time when the Glazers bought this club on debt, no, and day one there were protests. People will be too young to know this, or maybe they didn't even watch football back then. The moment the Glazers bought this club, there were protests, and then it became a Paris FC kind of thing where supporters started a new club completely. It's called United. What is it? What it's called? Football Club Manchester, FC Manchester. I think that's what it's called. That is a breakthrough from the Glazers ownership, I believe. Yeah. So you know, and it's very simple. You have two options. You either can complain when it's happening, or you can wait 10 years when we are even further down the mud and then get disappointed. Yep. I'm not going to do that again. I rather complain now than complain 10 years later, and or even 6 months later. Act like a the thing is, no, 6 months later people will say it's so soon, they need time, this, that, and the other. But the truth of the matter is, they are not doing anything to actually warrant giving them time. Bro, I'm They are worried. not doing Bro, anything. Nathan, I'm worried Thank right you, now. Pranav. FC United of Manchester. Thank you. FC United of Manchester. What I'm worried right now is this guy is saying Carrick getting sacked before Christmas. I'm telling you, Nathan. Yeah. I have been saying it since the start of the stream, and everyone heard it. The same people who are now getting frustrated with Ineos, with the transfer strategy and everything, will not even flinch in December, Nathan. And if United are in 6th or 7th, we are playing, let's say we're not playing the most ideal football. Our team is gassed out. We are lacking depth. We have like I've said this before. We are just 3 injuries away from capitulating, by the way, with this squad. Everyone will ask for Carrick's head. But no one will again understand the context of this board. Ineos did not back Carrick when we were finished the season with absolute high, are having a decent preseason, and not giving in the players. Now since we are playing Champions League. Do you see the hypocrisy? We'll see. You know it. I'm gonna tell you, in December, a lot of fans will come on our chats, Nathan, and will ask for Carrick's sack. But why? We are constantly forgetting that we have to still question the board. They are the issue. I'm just going to put this out there right now, because people are either going to remember or not remember. We said this, so there's no point going on about it. But I will say this, and I'll say this now. Yeah. If we finish top 4 this season as the transfer market stands, it is not because Ineos has played a masterclass. It is not because Ineos trusted Carrick and the players and the fit squad, or whatever narrative they're going to put. Simply because, right, as it stands right now, if we ask people, are we going to finish top 4? And people say we are finishing top 4 after you have seen everyone do the business they have done. I have to tell you right now, you're really deluded. Because other teams have moved forward while we have stayed still. Or are moving forward. Yeah. Let's be honest, Yuri Tillemans could be a great signing in particular, but let's also be honest, he's not going to play the whole season. Exactly. Right? And then the second thing is, Andre Santos could play the whole season, but he's not going to have a season like Casemiro. He's just not. He's not going to give us 10 goals and 5 assists and lead us to third. He's going to do the basics right, and that's what Carl Dallo, mark my words, Carl Dallo could get us, could be responsible for us getting kicked out of a cup match, and then everyone's going to go, why did we buy him when we had Vitek? This is literally all these 3 things are going to happen. So I'm telling you right now, if we finish top 4, it is simply because of Carrick and his ability to move to the players. It has nothing to do with this management. They have not put on a masterclass. They have not, quote unquote, trusted Carrick. They have hoped Carrick is going to get them across the line. Yeah. And if he doesn't, they're going to sack Carrick, and they're going to make whatever excuse they want towards the latter end of the season. Jim Ratcliffe is going to do his own web of lies again, where he goes, we didn't expect this and we didn't expect that, and it's not easy and it takes time. By the time it takes time to actually get good, no, we might not even have this ownership at the speed they are moving right now in general. Yeah, that's true. And Arjun is saying here, right,
Carrick will become the sacrificial lamb, and no one will give credit to Carrick if they do well. They will all give the credit, oh, Ineos held off with the budget and they did not go with the players. No, the reality is different. We failed in the first leg of the transfer window for the dreams that we sold. People come and tell me that. I'll ask you, Nathan, right away, a straight away question. Was Andre Santos an opportunistic signing or a data driven signing? No, it was neither. It was we couldn't get the players we wanted and we bought him. There you go. Why are we pretending like it? Exactly. No, I don't understand. Can I be honest with you? I'm listening to like James Lawrence Alcott and all these people that I'm sure they speak well. I'm sure they have done all their information. But why? The one thing everyone pretends to do is like this was a plan. This was not part of the plan. No. Like stop. You know, you want interviews with United players. You want access to Manchester United. God bless. Everyone's doing this for a living. Good luck with that. But don't lie to the fans pretending like this was all part of the plan. It's really sick how people pretend like this was part of the plan. Why don't they go, this is how Andre Santos is going to change the team. They don't say, oh, we were never supposed to get Andre Santos to begin with. We were never linked with Andre Santos. I mean, it's really disingenuous, yeah. And I don't know how fans don't feel more insulted when people make videos like this. Because honestly, who thought we were going to get Andre Santos at all, let alone this year at all? I've not heard one person say we should get Andre Santos from Chelsea. And when he was signed before he played for preseason, everyone was unanimously not that confident with the signing. Let's be also honest. Only after seeing him in preseason, we are like, okay, this guy can do the job. But I absolutely agree with you. And he's saying, don't you think Carrick is also getting backup by boards as Arteta? Club going for long-term success, focusing on youth team. Milan. I have the signings of Arteta. First of all, Milan, and I don't think I need to go further than this, but Ruben Amorim got more backing than Michael Carrick. Yeah, 100%. 100%. Only to finish 15th, by the way. I mean, he finished 15th with the same players, Michael Carrick, minus 3 players who played regularly, finished 3rd. There you go. Nathan hit the nail on the right on the head. Same squad finished 3rd. Mbumo and Cunha were primary targets that we secured for Ruben Amorim. Matheus Fernandes, Elliot Anderson, Tonali were primary targets for Man United, which we did not secure. That's the reality of this window when we are playing Champions League. It is the truth. See, if chat, a lot of the people, Nathan, chat, keep on telling me, no, we were never in for 3 players. No, we were. In March, Fabrizio. And people coming, Fabrizio is fake. Fabrizio is not fake. Come on, yaar. I mean, Fabrizio is right after David Ornstein. Fabrizio had said this in March. I have a Twitter post as well saved with me. Tonali was high in the list. We never went for him. You remember the Bruno Guimaraes link? We were linked with Joao Gomes as well in January. We were ready for 60-65 million, ready for Semenyo. We had 85 million for Baliba. So money, and when Mark Goldbridge cooks in his streams, I actually agree with him in a lot of the points. The other day he started off the video by basically going transfer markets we were in Europe and transfer markets we weren't in Europe, and it was shocking. It is absolutely. And I have a stat here. Milan, backup of Arteta in the next 2 seasons, they went for Declan Rice. I agree with you. But in those 2 seasons, they also at least helped plug in the gaps. I have directly the signings of Arteta. I have this whole thing. And glad I always save this. And I always show this. You know, when Arteta was signed mid-season, these were the signings under the previous management, Unai Emery, by the way. The next season, he was given Odegaard. So he got centre back, right back, goalkeeper, midfielder, another right back, left midfielder. Ben White even. Yeah. So they at least, even if they did not get the quality players, they at least fit in the gaps. United have only signed 2 players. Right? The next season, Arteta was given this. Again, 6 to 7 or 8 signings. Gabriel Jesus came off a fantastic season at Man City. He was signed. Trossard was cooking at Brighton. Kivior, everyone was appreciating. Jorginho came off of a fucking UEFA Player of the Year season. Zinchenko was cooking at City. He actually was looking really good at Arsenal. So that's what I'm saying. If people think that
Carrick is gonna get the same backing like Arteta. The story is completely different. Arteta at least had at least their stopgap signings. Now, because of those stopgap signings, at least they have a squad of back. When we say backup of backup of backup, they at least went with that approach. In the third season, they went for Declan Rice. So we are not getting back, bhai. Simple si baat. That's what it is. No, we actually tried for Santos last season in a swap deal for Garnacho. No. We did not. We did not. Santos is signing driven by Vivel because he was one who signed for Chelsea. And why didn't we sign him before going for Matheus Fernandes and Sandro Tonali? Matheus Fernandes was the one ahead of him. It is the truth. It is the reality, man. Now, people might come and tell me he got injured and we dodged a bullet. But he was our primary target. It is what it is, bhai. So United have to finish 17th, so they would have signed main target. Just look at Spurs. I mean, it's really sad, but it's also true, isn't it? Yeah. The clubs who are acting right now in the transfer window have finished way below us. Chelsea. I'm telling you, Chelsea, after selling Enzo Fernandez, will sign 2 more midfielders. City are going for Enzo, by the way, 120 million. Yeah. See, look at the midfield of City. They have stacked. They are getting stacked. Buadi, Reinders, Nico Gonzalez. We are playing, Nathan, we are playing the 4th game against Man City. Semenyo is cooking in preseason. Okay? Preseason City cooking. I've seen the game. Their midfield, our midfield is Manu, Tielemans, Santos in the pivot. Their midfield pivot is Nico Gonzalez, Reinders, Anderson, Buadi, and possibly right now Enzo Fernandez. We are playing in them in the 4th game week. You tell me. All the high of the last season. If we have a very poor game, demoralize our whole squad. The thing is, we could win 4 games in a row. Yeah. The thing is, we can win 4 games in a row. But again, this is my point, right? Yeah. You can't praise Ineos for whatever we are about to do, because Ineos has not done anything. For example, if we win the first 4 games without Tielemans and Santos, for example, or let's say they played bit part roles, they didn't do anything. Where is the masterclass? Yeah. Where is the masterclass? Like, for example, let's say Yuri Tielemans gets, just hypothetically, just for the sake of saying it right now, let's say he gets 10 GA, and let's say even Santos gets 10 GA. Is anyone walking around going, they did a masterclass? Look, they got 20 GA between them. Is anyone genuinely going to say that? Like, at the end of the day, you can't help but realize that we did not sign the people we wanted to sign. Yeah. It's as simple as that. See, Nathan, and also I don't mind pivoting. See, your transfer plans might not go in a certain way. The last signing we made was 1 month ago. So where is the pivot? Where is the transfer? If there was actually a transfer strategy, we should have signed already 6 players before preseason. But this is what I'm trying to say. Na, there is this narrative where we are being patient, we are waiting for the opportunities, this, that, and the other. We are being smart. Nobody knows what we're doing. Nobody knows what we're doing. Yeah. We actually have no clue we are not doing anything. Yeah. That's it. Nathan, it's simple. Santos was brought because we couldn't get our priority targets, but that doesn't mean we aren't looking at Santos. Shamindra, that's my point, right? We finished 3rd. Why are we even having this discussion about Andre Santos? At the end of the day, he's a 5th choice midfielder at Chelsea. He's not Enzo Fernandez at Chelsea, right? At the end of the day, Chelsea is selling him to us because they don't want him. If you want to say it's as simple as that, then it's as simple as this even. That's true. It's as simple as that even. It works the other way even. It's as simple as that. They're selling Andre Santos because they don't think he's better than what they have. Yeah. Aditya is saying buying Elliot Anderson 120. It's not. See, it's all hindsight. Today, if Ineos would have bought Elliot Anderson, Jed Spence after the World Cup, Jed Spence has gone for 25 million pounds. 25 million pounds. But again, Nathan, Jed Spence is something that we didn't need.
again a No, right. no, I'm Again a just saying if we're right-footed talking left about tackle. no, no, I'm talking about value for money for players. Yeah. After him having a good World Cup, he's only gone for 25 million is crazy. Yeah, yeah. I'm saying in terms of value for players, Yeah. what people are spending. Yeah, absolutely. Yeah. And he's saying that buying Elliot Anderson for 120 does not make sense, but these bums value Andre Santos at 50 million pounds, who has bare minimum Premier League experience, but they value Kone at 40 million, which is stupid. I don't know how that's what is going. And people are telling that we should not have never gone for Elliot Anderson. See, today, if and Nathan, tell me, if Ineos would have signed Elliot Anderson today, then the whole environment around the fan base would have been a lot better. They would have been head over heels. Oh, we got Elliot Anderson, game changer signing and everything. So that we can't be sitting on both sides of the whole thing now. Oh, we just to appease ourselves inside that we didn't fail. This is a transfer strategy. If we would have got Elliot Anderson, all the fan base would have been like, oh, we just need one more midfielder and we are good. Now we did not get Elliot Anderson. Now people are trying to justify that, oh, these were data-driven signings already in the... No, these are opportunistic signings. Tielemans, Goldbridge tweeted a day ago what was his release clause because he got a scoop somewhere from inside of the club. And then he was signed the next day because United saw the opportunity. And I like that. Make those opportunities signing. But what after that, Nathan? It's been a month. We have been linked with Chouameni. We wasted time there. Okay, we wasted 1.5 months on Emerson as well, by the way. I'll just ask you one question. You're saying it's been a month, right? This is like the third time you have said it, right? Yeah. But we take a month to sign players anyway. So, like, what is the genuine difference? Like, people thought they were going to do better than the Glazers. In what? Like, we used to complain the Glazers took time, but the Glazers signed what we actually... They paid money in simple words. Yeah. Here they are taking time and buying nobody. Here they're taking 1 month. They took 1 month to buy Mbeumo. They took 1 month to buy Cunha. It's not like they're doing business any faster. So what exactly do they actually bring to the table? Yeah. They don't want to sell Rashford at a discount. They rather pay him the 20% extra now that we are in Europe. But people are complaining about wage bills. So you tell me something. You're complaining about the wage bill, but you're willing to pay the 20% extra because you don't want to sell Rashford at a discount. That's so it. You explain to me, no, is this not weird? We are stuck with players right now whom we have paid Ayushman is saying some fans wages. are saying Glazers are better than Ineos. I mean, if you look at what Ineos bought when we were crap and good, and you see what they are buying when we are crap and good, I mean, who would argue? I was shocked when Goldbridge did that thing on the... I don't remember where I saw it, but I guess he just basically said what we bought when we're in Europe and what we're not bought when we're in Europe, and it was shocking. These are facts. And I have to be honest with you. I don't even remember it like that. It's such a blur. The last 12, 13 years in many ways is such a blur, right? Like I never even clocked like some of these signings were bought when we were out of Europe and stuff like that. Yeah, we can check actually. Kind of crazy. Yeah, we can. No, but my overall point for people watching is like, how long are you going to be fooled? Like, are you going to wait 10, 12 years and then get angry at them like the Glazers? Like at the end of the day, if you don't hold them accountable now, then we are going to get dragged down further. That's true. So it's weird. Yeah. Someone was asking for Camavinga. See, again, hospital beds, man. Hospital beds. No more. But the thing is, Atif, that they wanted to sell the player, but we also must be interested in buying the player, na? The thing is, there are no links to some of these players that you guys are even so smart in the chat. Everyone is talking about like Camara and Buadi and the one fellow from the Spanish league. I forget, but I think he's French or he's Moroccan. Last year, everyone was talking about him in the midfield. Yes, Agume. Agume. Like, Agume. We are not even linked to these players. So like when you go, he's values this, he's values that. We are not even looking at these people. Yeah. He's also asking why United not going for Camara. Neeraj, we are not even looking at these people. Yeah.
I have no clue who the shortlist is right now. These are just players, names taken by journalists to have their own engagement thing. There is no concrete news. I see Indy Kaila posted at least 3 or 4 midfielders that we have bid for them. Baliba, Chouameni. Okay, there was one for that we are going for. The Anders Chima came in suddenly. Anders Chima from Stuttgart. That name died down. We don't even hear Tyler Adams' name anymore, Nathan. Atif is saying the Athletic reported today about Manchester United being interested in Kamavinga, bro. Atif, before the season began, before the World Cup began, we were linked to Kamavinga. We're linked to Kamavinga, by the way. It's like 2 weeks. It's 2 weeks left for the season to start. Yeah, we have not even put in a bid. Yeah, we were linked with him in March as well. Man Utd will go for Tyler Adams. That ship has sailed. I'm not even hearing anything on Tyler Adams anymore. Oh, we have the people we are linked to also. No one is talking about anymore. Sanderberg. Where are those Sanderberg links? No links. By the way, who wanted Sanderberg first? You remember? Who? Yeah, you remember? Ole Gunnar Solskjaer. Oh yeah. And then he got Van de Beek instead. Oh shit! Yes, correct. It is. You have to stop pretending like if we sign players, we'll be back. In my opinion, let Carrick do whatever he wants with these players. Given 3 years without any interference, hard pill to swallow. I want to give Carrick few years. Ineos will sack him to like save if their we own sign ass. players, we will be back. In my opinion, let Carrick do whatever he wants with these. But how do you know that he wants these players, Ajay? He might be just swallowing the pill. He's the one he's having the hard pill to swallow right now. Yeah, exactly. He wanted Elliot Anderson. He wanted Matheus Fernandes possibly. Did not get him. Now he's having to work with Andres Santos and he's doing a fantastic job, by the way, with all the players he has right now. So if people come and blame Carrick is the problem, no, Carrick is not. And I'm telling you, stop pretending like he signed the players will be back. I'm telling you, Ineos, like they did with Dan Ashworth, like they did with Ruben Amorim, Carrick will be, because right now I'm hearing some news and murmurs that there is some unrest in the board as well, not aligning on the same vision. We have seen this story before. Dan Ashworth was sacked. Ruben Amorim, Wilcox did not get along. The worst part is Dan Ashworth got sacked for telling the truth. Yeah. He basically said, get Tuchel or Southgate because we have the squad for that kind of team. The board said get Ruben Amorim because he's the next brilliant upcoming manager. And when Dan Ashworth said we don't have the team to support him, they just sacked Dan Ashworth. But then what happened after that? 15th. Yeah. So who was actually right? Was Dan Ashworth? Listen, you don't have to. I didn't like Dan Ashworth saying let's get Southgate and Tuchel. Southgate was never an option for me back then. No, but let's be honest. If you hear the excuse given for Southgate Tuchel, it makes more sense. Yeah, and that's what happened. That's what happened in the end. No, he ended up becoming he ended up being right. Yeah. He really ended up being right. Yeah. Tyler Adams is average, bro. Chill, Ash bhai, no need to get the players. अरे वही तो बात कर रहा हूँ ना. I'm not saying that we should get Tyler Adams. Captain America. I'm not saying that we should get Tyler Adams. I'm saying the players that we get linked to, we hear them for few days and it all dies down. There is no links. There is no strategy for midfielders. I'm telling you, if United sign Lewis Page, that will be it. That will be it. God. Can you imagine, bro? Raz is saying Carrick getting sacked before Christmas and getting Tuchel. Can you imagine? Then we are just going to I don't think so. Tuchel, you know what's the funny thing though? If that happens, then Dan Ashworth is the only one who should have been in the job because Dan Ashworth's the only one who predicted all this was going to happen. How hilarious that would be if we actually get Tuchel by Christmas. No. Tuchel is not coming. Tuchel is like they're locked in. But I'm just saying. Imagine how funny that would be, right? That would genuinely show how bad our luck is. Yeah. Because the one guy who said let's do this 2 years ago is the guy that got sacked. Everyone else stayed here, and then we end up getting his recommendations. Yeah. And there's another question I wanted to ask. So this is big 2026, okay, Nathan? This is big 2026. And against Hull City, our starting back four will be. Oh God! Our starting back four will be Luke Shaw, Maguire,
Lisandro Martinez, Diogo Dalot. Okay. Where's the rebuild happening? I actually think it should be Shaw, Heaven, Maguire, Shaw, Heaven, and Maguire. Dalot. Yes, correct. But Shaw, they're Heaven, also Maguire, trying Dalot. Lenny or a right back, bro. So I'm like, so you see what I mean? 10 from Ten Hag to this right now. We've extended Maguire's contract. We are still believing Ineos United still believing that Luke Shaw will give another 38 game season in a 70 game season. I'm telling you, Nathan, right now, and chat, you let me know. We are 3 injuries away from capitulating. If Manu gets injured, okay? People come and tell me, no, Manu cannot get. Manu has been injured over the last 2-3 seasons. Manu missed his first breakthrough season because of injury. Remember during Ten Hag, the season before Ten Hag. We are possibly one Harry Maguire injury, Manu injury, and possibly one Sheshko long-term injury from capitulating this season. Tell me what you think. Which are the injuries that will have this season with no more signings, by the way? Listen, this might sound really crazy, but as long as we have Bruno Fernandes, I'm not worried. I'm not worried. As long as we have Bruno Fernandes, I'm not worried. Because the other year we finished 8th with 60 plus injuries. Yeah. With them. And I think the squad was not as good as this squad overall. So that way I'm not really worried. Yeah. But if Harry Maguire gets injured, I'm not worried. I feel like Heaven can handle the left hand side of things. Heaven and Joro, I think, assuming the injury is not for the whole season, they'll be fine. But defensively, I'm not that worried, honestly, if you think about it. Defensively, defenders, I'm not worried about. Sheshko, we are going to have to do something there. And we shouldn't have sold Højlund. I mean, at the end of the day, that was so stupid. We should have just taken the Xerxes money. But because we were getting more for Højlund, we sold Højlund. It was just, it's penny pinching to the point where it's just sad. But now we can't get rid of Xerxes, and now might not even get the 30 million that we were going to get last year from him, from wherever, Juventus or whichever team was looking at him last year. So striker could be an issue, but I think as long as we have Bruno, we'll be okay. But this is like that's real copium, dude. That's copium. That's exactly. But that's not sustainable. That's the problem. Now Shamindra is asking me, as I बोल रहे हो Tonali हमारा target था, तो why didn't we agree? That's the same thing. But Shamindra, that is the same thing I told Atif earlier, that before the World Cup was going, we were linked with Kamavinga. We're still linked with Kamavinga. Nothing has happened. But that doesn't change the fact that we were still looking for him. At the end of the day, if they don't want to agree personal terms, if they think they didn't agree personal terms because they're saying that the money was too much, Shamindra. Now what can you do? Ineos are not willing to pay more than 65 million for anything. So Shamindra, let's do a little bit of chronology, right? Yeah. When we were on the precipice of top 5 towards the end of the season, the narrative from whatever you want to call it, ITKs, journalists, this, that, and the other we really need to get top 4 to get our signings next season to bolster the squad for Champions League. What bolstering of the squad have we done? I'm telling you, Karl Darlow is not even better than Vitek. I'm telling you right now. But he had a great season at Leeds last season. He had a good season, by the way. But this is what I'm trying to say. At the end of the day, he's back up. What are we going to do with him? But he came for free. And he came for free, bro. He's so good that Leeds didn't want to even re-sign him. That's the best part. Leeds, by the way, paid top money for Trafford, by the way. Top money. They got Trafford, right? They got Trafford, yes. I mean, listen, man, these Manchester United rivals are a bit shameless, but let's not go there. They paid top money for Trafford, by the way. Then we got Andre Santos, which Shamindra said we were linked to with a swap and all. And listen, I'm willing to concede because quite honestly, Shamindra, this is not about Andre Santos.
It sounds like we are bashing Andre Santos, but it's not. It's about our own intention to do what we were supposed to do with our transfer window. Yeah. It's not, if Andre Santos does well, I'll be the happiest person on the planet. No, but we cannot sit here and pretend like this was the plan. This was never the plan A. Sorry, let me put it this way, like Shamindra said correctly. This was not the plan A. Let me be more clear. This is not let's not pretend signing Yuri Tielemans at 29 years old with a release clause is plan A. We should have got him before he moved to Aston Villa. He was linked to us. We were linked to him then, which would have been really good because we wouldn't have got Ugarte. That's a whole nother thing. Because I remember I was listening because I was doing something for my mom. I was listening to the live stream. And I heard someone say Ugarte's injury has caused us signing. I can't agree with you because we are looking for Lewis Hall. It has nothing to do with Manuel Ugarte. But don't you think also Manuel Ugarte would have given us 20 wages million. Are covered by FIFA. The wages are covered by FIFA already. Yeah. No, and also if you look at it just from a sale point of view, we would have got 20 million max. It's not like we would have got 40 million for Ugarte. I mean, he's done himself no favors in the last 2 years. Yeah. So this is my issue. It's like none of this is plan A. And we were told we are going to get plan A, and it was really important to finish in Champions League spots. So now we have no plan A anything. None of our players are planning. But Lala is on about the injuries. But my point, sorry Nathan to cut, but Lala, you're on and about in the chat for the injuries. See, we are not playing. We are playing possibly getting ready for a 70-game season. I mean, your injuries fucked up your season last year, bro. Like, why are we pretending that our squad depth is enough to sustain? We need another 4th or 3rd place. And we are seeing Chelsea, and someone in the chat mentioned, see here, mark my words, Chelsea will get one of Wharton and Alex Scott because they're selling Enzo Fernandez. They will get 2 midfielders for the same price. I'm telling you. No. I have said on my tweet, and a lot of people agreed with me. I will not be surprised if Chelsea goes in for a Marc Casado, because Marc Casado is technically right now formally on sale. They will go for him and Wharton, or possibly Alex Scott. Should we get Marc Casado and join the Barca? We'll get all the Barcelona fans. We'll be called Catalunya Putra alongside. I'll enjoy it. I wouldn't mind. Why not? I wouldn't take. Caring is caring. Yeah. So that's what I'm saying, Lala. The problem is that if the plan was to bring in stopgap signings because you were not willing to pay more than 60 million for any player, then these signings are not that difficult to make, if you ask me. Today, if you make a bid for David Raum, like Yuri Tielemans didn't even flinch for a second before joining United. He didn't flinch. See, I'm saying this whole thing. If your plan is to depend on Luke Shaw, then get a backup left back who has at least played with Šeško, who was in your plans 3 years ago at least. Get him for 2-3 seasons. If Lewis you honestly think David Raum is going to replace Luke Shaw in the team? No, he's not going to replace Luke Shaw. No, Luke Shaw will start. What's the point of getting David Raum? No, that's my point. At least get depth in numbers, depth in quality at least. The problem is this is not helping our squad advance, like our team advance to our next target. See, I know ideally I want Lewis Hall, but I'm also being realistic right now. But it's not. See, this is what I'm trying to say. No, I think sometimes people get a little bit confused because of how we say things. I know. Yeah, because it's not really about a player. Yeah. It's not really about a player. It is about our intention in the transfer market and what we have done. This is nothing to do with any particular player. This is not he's worse than the other. It's not about that. It's about the narrative that was built, the hope that was thrown onto the fans. Yeah. And the performance in the transfer market, which has not panned out. Yeah. This is nothing to do with players. Exactly. The players, unfortunately, are going to be scapegoats. If they do badly, all the fans are going to go on them. We didn't even want them, this, that, and that, which is true. A lot of that is true. When fans say we didn't even want them, no, that is a fact. Because when the fans were saying it before the season started, no one's going to remember. Then everyone will say these fans are negative. For example, if someone said we don't want Andre Santos, we wanted whatever, pick a player, Chouameni. Every time Andre Santos does badly, everyone is going to go, we didn't even want Andre Santos, which is true.
they'll be deemed negative, but it's true. It's 100% true. We did not want Andre Santos. That does not change the fact that we did not want him. That's what I've been saying, Nathan. Like, why are we sitting blindly just denying the facts that have happened just because we want to feel good about it? I have always said this, Nathan. Yes, you have failed, but you want to pivot. You pivoted with Andre Santos. It is working out fine, but you need to pivot quickly. At this point, my problem is if your plan was to always get stopgap signings now. Another problem. They're not even stopgap. I would say they're more makeshift. I wouldn't say they're stopgap. Hall in the starting lineup against Everton in preseason. Let's go. Absolutely. There was news by Athletic, by the way, the same Athletic who draws the transfer board. No, 2-3 days back, he was saying that he was training alone because of a minor injury. He's back in the squad, starting 11 here. There you go, bhai. There you go. This is it. This is the new reality. So I don't think so even Newcastle is willing to sell Shaw right now. Just pay the 40 million price tag. You can't take 35 million. Hall. Lewis Hall. See, this is it. He's starting. Have you ever seen Raum play? Bro, I don't want to get into this, man. Good for you, Lala, if you've seen Raum play, man. You're missing honestly just missing the point of the argument. It doesn't matter. Okay. What's the difference between makeshift and stopgap? Stopgap is when you know the players are crap and they're just filling in. Makeshift is these players could actually do well and be long-term players. And I actually think Yuri Tillemans will probably play his contract here. I think he's good enough to sit the whole contract through. No, Yuri Tillemans will sit the whole contract, and he's a player who is very intelligent. I think he was pivotal to Aston Villa. Stopgap is literally buying someone now to buy someone later. Literally a year later, maybe. Arsenal did a lot of stopgaps. Like, if you tell me stopgaps, you know what is stopgaps. Stopgaps was Tomiyasu. Stopgap was Lokonga. I've never even heard of Trusty. I just saw Trusty for the first time. Yeah, Aaron Trusty was there. Yeah, he went to then Colorado, right? No clue. And you know what was stopgap? Stopgap was possibly they got in Fabio Vieira but never used him, so they always loaned him out. Stopgap was Marquinhos, right? They had Trossard was initially, Nathan, I have heard Arsenal fans say this, by the way. And now on the hindsight, Trossard helped them to win the league. But Trossard was a stopgap signing for Arsenal. Trossard. He was stopgap, but he was a quality stopgap. What I'm saying is, if you want to survive a 70-game season, we need an Andre Santos. But that's not the final solution. Andre Santos today is giving you good preseasons. What's the guarantee right now that he'll be fit? Because right now with only 3 or 4 midfielders with so many games, who will you start? I'll ask you a straight question now, Nathan. Who will be your midfield 3 with the current squad we have for the Champions League games? Who will you start in the midfield in Champions League? Depends. Who are we playing, dude? If we are playing some Albanian team, then I'd start the kids with Bruno. I start the Fletcher brothers with Bruno just for fun. Yeah, why not? Yeah. Why not? Rotation, no? Squad rotation, usage of minutes. See, I think it's probably going to be Santos, Menu, and Bruno, probably. Yeah. I feel Mazraoui and Licha in the pivot. Let's go. Oh. You know, Aiden Heaven and Mazraoui played against Chelsea. They cooked in that centre back. Aiden Heaven got man of the match that night. Zinchenko was a stopgap. See, Nona is saying, Arsenal fan, Zinchenko was a stopgap. Zinchenko was signed after a very good season at City, by the way. Stopgap. That's what you call stopgap. At least some quality. That at least if that guy gives 25-30 games from the bench, at least it does something. Martinelli is going to Galatasaray? No, they're links. Martinelli is going nowhere. For real, they're going to start with Zolis next season, no? Zolis looked good. They got like 2 assists in the preseason. Bro, even Arsenal. So I was looking. Sunderland, last season they made 186 million signings. This season they have made only 1. Munir, that is free. They have not spent.
I think overall, Wait, if you see the pattern in the Mounier, Premier League, who are you talking about? Sunderland. Thomas Mounier, they only got Thomas Yeah, Mounier as Mounier. the only signing. They have only got Mounier. Yeah, they've only got Mounier. They've made no So signings. far, they've only got Mounier on signings. Yes, 0. By the way, Fenerbahce confirmed Romelu Lukaku has joined from Napoli. He's joined from Napoli. Bomba by Ben Jacobs. God, at least I don't have to watch him if I do Napoli watch-alongs. Oh my God. Gabriel, okay, Check, Ben Jacobs is Shamindra posted. Singh, check Pleti goal. Wow. Ah. Pleti goal has put it. So Ben Jacobs right That now means is they're going to posted start. at They're going Gabriel to start with Martinelli. Zolis. That means. Wow. Ah. Let me share that. Wait, hold on. Let's go Twitter. Let's go Twitter. What's happening in Twitter? Fuck. Okay, now this is happening. Ben Jacobs saying Gabriel Martinelli potential option for Galatasaray as a no breakthrough yet in talks for Rafael Leao. Galatasaray made an exploratory approach to Arsenal. Hold on. Amarim selling Leao? Yeah, bro. Leao would be like, I'm playing at number 10. Bro, by the way, you know, I heard Dhruv say he's looking to see how well Amarim's going to do in AC Milan. I literally saw yesterday that Pervis Estupiñán was going to go somewhere, I think Aston Villa. He stopped him. Yeah, he stopped. And he literally stopped him to reevaluate him, whatever the fuck that means. Yeah. Then plays him, and then puts him on the transfer list again. Yeah, bro, he's already messing with players. He's not even been there for a couple of months. He's already messing with players. Yeah. I love it. Plenty goal. Okay, Galatasaray have actually submitted a bid for Martinelli. Yeah. 45 million euros. Bro, that's a great deal. Oh, that's a top deal. Honestly. Bro, where is Turkey getting all this money from, dude? Seriously. Ma kasam bhai. This is crazy. 45 million offer is actually happening. Will Martinelli even go there? I don't know. Like, Leao said he is leaving before Amarim came, but no one wants him. So this is happening, dosto. So this is happening. Money laundering. This is money laundering. Dusan Vlahovic to Besiktas. Yes, this happened. 100 so that means it will be. Thank you so much. So that means it will be Trossard and Vlahovic as part of the attack in Besiktas. Yeah, Trossard and Vlahovic. Exactly. We might get okay, another news. You will love it. Iliman Ndiaye was this close to joining Al Ahly and he backed away last minute. Yeah, that I saw. Yeah. So I am thinking if Martinelli is leaving, Trossard already left, I think Arsenal is going for Iliman Ndiaye. What do you think about this Iliman Ndiaye situation? Should United go for him? We have already I don't think so. United will sign in more wingers. United are not signing any more. I don't think United might do any more signings to get wingers. Fuck, man. Ndiaye wants to play in the Premier League. Yes. Yeah, I think it'll be a very good deal for Arsenal. Very, very good deal. Yeah, saying Ashda, the thing is progressing. I think our academic graduates' performance will decide our season. But I'm telling the chat, how much you guys are willing to let go of certain bad performances from these youngsters. Krishnan, I want you to come back to my chat in December when I'll be doing a watch along. Lacey. Right? And if Lacey has a stinker, few stinkers, we all love Lacey, right? We all want Lacey to come up. Will you be willing to give Lacey that time, at least 1 or 2 seasons, to let him grow the way a youngster is supposed to grow? Or will you judge him or sell him? Because Nathan has always said this. Garner was already, the judgment was made on Garner and Carreras. What has happened to them? What has happened to them? You tell me what has happened to them, chat. They're doing better than the players we have. There you go. So, as fans, I'm willing to give them the slack. Okay, they might have few bad games, but they need run. Saudi offer. Who saw? Yeah? Saudi needs a Saudi offer. Someone has written. Savio to Spurs, 70 million. Neto is going to City, bro. City are bidding for Neto. 81 million, which is what, 68 million pounds? Yeah. Lala said that's not the price he's going for. I think that is the price Sunni is going to go.
क्या सपने देख रहे हो ऐश भाई? अरे नहीं Wait, देख you रहा know what? सपने. You know what is crazy? If he goes Yeah. for 68 million, that is more than what they bought him for after all Yeah. the years he spent there. Yeah. It's crazy deal. This is crazy money laundering. So Yeah. I think Neto is involved in the deal with Enzo. I'm pretty sure. And I'm see, and I will not be Nathan, I'll not be surprised if Chelsea finishes above us in the season. Because they're playing less games. I think they are going to finish above us. They're going to finish above us? You're making this statement. I mean, I'm waiting looks to do my likely. Premier League predictions, but it looks likely. Yeah. It looks likely, yeah. Arsenal will go for Barcola. Isn't Barcola going to Liverpool already? Deal is done, right? Like they're already. Deal is done? I don't No, not deal think is done, the but at deal is least done. agreement is done. They got Mika Götze, right? So now they don't mind getting rid of Yeah. Bakula, right? They bought Yeah. Götze first, and now They got transfer Aklusha suddenly- as well. They got Aklusha as well. They've done that. Zirkzee needs Magnus. Saudi offer more than ever. Unfortunately, a lot of non-United fans think that we can't spend money even after having the biggest fan base in Premier League revenues, tickets, and sales. That's It what doesn't- Goldbridge has been saying. But here's the thing: no, it doesn't matter audio fumes. At the end of the day, if they don't want to spend money, they don't want to spend money, and Yeah. those non-United fans will believe that because we're not spending money. Very simple. We are doing the wise thing. See, I'm not saying go ballistic Whatever 400 that million. means, bro. No, I'm not saying United fans Ash, that go you're ballistic. saying go 400. ballistic. We are not No, doing not go any ballistic. signings. Yeah. No, you're saying not go ballistic. We are not doing any signings. Any signings, It is the opposite of ballistic. Is like a stretch. We're not doing anything. We're not doing anything. You're saying Lacey and Fletcher deserve time as they can be really good So players. stay Lacey. God, I keep forgetting which Fletcher, but one of the Fletchers is the under 21 captain. Yeah. If Jack. we are not, Tyler. it's Jack. Tyler. I think Tyler Fletcher. Anyway, Whoever. I mean, the point is, if we are not going to play them, we have to send them on loan, man. Yeah. We can't do any of this funny business, sir. Either send them on loan, see if they're ready. Try to streamline the process, like how we did for Ahmad and Carreras. And one more thing, I wanted to ask you, Ash. Maybe Yeah. you know, Yeah. is what is happening about Collier? I've not seen anyone say anything about Collier. Collier is back. No, I mean, is he on loan? Is he already gone on loan? Toby Or? Collier, I think, is back. He's back from loan. He's Let back me in our check. squad, but I don't know. Yeah. Have we done business with him? No. That's what I want to know, because Collier, nothing is happening with Collier. Nobody in the chat has said anything about a Collier. So I was just And by you the know, way, his you remember contract ends next Ruben year. Amorim's interview that Collier was more ready than Casemiro. No, man, I don't know what to say here. It's better to say nothing. It's actually better to say nothing, because some of these statements, no, I mean, if people think they're going to age well, no, they're going to be very disappointed. Oh, he got an assist in the Rosenborg game. Okay, so he played also for us. He played in the played well. Wrexham game even. Yeah, But he's Toby not. Collier But was the there. thing He is, came from the but he's bench. not played in. He's not played in the last 3. He's back in the squad. Yeah. He's still there. But he's not played in. He's not played in the No. last 3 games. So he played. Last game he played was Rosenborg. I think we are not even looking to loan him out, because I think Toby Collier was, if I'm not wrong, was the under 21 captain back in the days. When he was with Kobe Mainoo. Yeah. So the thing I just read, Toby Collier's contract ends next year. Yeah, it ends. Is So either Collier we going to be extend sold? or we sell, I guess. Yeah. Because if you're looking to sell Harry Amas for 6 million, bro, 6 million. Bro, okay, what do you think? I have seen a lot of fans talk about that Bayandir sale for 4 million. But I'm like, we signed him for 4.5 million and he hardly played game for us. So I think that's a good deal. Ash bhai, आज news आई Burnley wants a loan move if Rodri comes. I was agent से meeting. But you guys are also selling Casado, so I don't think so you're gonna sell Bernal as well in the same season, because you sell them all, Khalem. Sell them all. Sell them all. Give us Gavi, no. We'll buy a few, man. Yeah. We'll Give us Gavi. Sell them all. We have a top left wing in our La Fabrica, Alexis Kriria. Go and get him ASAP, or you'll have to pay 50 million next year. So you guys should play him, because Rooney Baji got an ACL. And again, Santra. So no, come on. Rooney Baji is Barcelona, right? Yeah, he got an ACL. But he's talking about Barcelona. Santra is a Madrid fan, na? He said La Fabrica. La Fabrica. Sorry, I heard La Masia. I'm like, what?
Okay. La Fabrica, yes. Alex Kiria. See, bro, I don't think so. Even we are looking at those players. See, I don't think. See, I don't think these players are even part of the plan for Ineos. Like I've seen so many people on the chat like flunging in names and everything. I don't know, bro. Like even like Lamine Camara and all. Lamine Camara suddenly became a link out of nowhere. I don't think so. United are even there for Lamine Camara. Barca linked to Lukeba again. Oh yeah, I think someone signed Lukumi as well. John Lukumi, the Colombian defender. Yeah. Yeah. Bro, everyone's making moves, man. That's just how it is. Someone asked me why didn't we go for Usman Diomande? Usman Diomande already joined Forest. By the way, Usman Diomande, when Ruben Amorim was here, said that we'd have to spend 80 million for him. Yeah. The year later, he's gone for what? 30 million to Forest? 41 million euros. So about 35. 30 odd pounds. Bro, but this is what I'm saying, right? In a year, the man went from 80 million to 30 million just because we were buying him. At the end of the day, at the end of the day, there's something where people try to rob us only, and out of desperation, we have no choice. We either have to buy it. Arsenal are linked to Kunde, by the way. Doesn't matter, man. Arsenal are linked to Kunde, by the way, because they can't trust Ben White. They can't trust Ben White. They can't trust Timber in the injuries. Right? They have a stacked squad. They're not going for left wingers. That's the only problem. They're going for other people. They're not going for other players. Yes, Juventus signed Lukumi. Yes, Juventus signed Lukumi, by the way. Juventus also. So Juventus got Randall Colomwani. We are not able to make that loan deal happen to Zirkzee because I think Juventus also let go of Openda as well on loan. Now the only way we can make Zirkzee happen is if Jonathan David leaves as well, because someone put in the chat. Someone put in the chat earlier that Villarreal is going for Jonathan David. Yeah. Or was so it if Jonathan that happens, Rowe? Sorry, I don't remember. Maybe it was Jonathan Rowe. Maybe I didn't read it correctly. Jonathan David or Jonathan Rowe, one of them. Yeah. Goldwich is a Forest fan. No, he's from Nottingham, so people he's a Forest fan. But anyway, even whether he's a Forest fan or not, it doesn't change the fact that his points was factual based. Yeah. He just pulled out the transfer windows of when we were in Europe and when we weren't. Yeah. Jesus going to Napoli. Yep. Which one? He goes Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel. Really? He is going. Yes, it's a legit news. 100%. Hoyland is playing well there. Why would they buy another striker? He's going there. Gabriel Jesus is going there. I think. Bro, this is going to be crazy, man. Copy Ninja put Barca link to Jorge Mikotadze from Villarreal. Bro. Oh. Mikotadze I was so impressed with him in the Euros the other year for Georgia. Yeah. Oh my god. Oh, he was really good, Mikotadze. Oh, he was love the celebration of it, man. Yeah. If they get Mikotadze, these are gun players. This could be fun. These are players who will, let's say, not give you the goals and assists. This is like Cunha signings. They'll just absolutely, give their 100% on the pitch, and that matters a lot. Oh, so I was right. It is Jonathan David. Okay. Yeah, Jonathan David. Then. Fine. I thought it was Jonathan Rowe for a second. Yeah. So they are Lukaku both replacement is Jesus. Yes, Gabriel Jesus is actually. That sounds insulting to Gabriel Jesus, dude. I can't lie. Yeah. There are more clubs in the race actually. Napoli is there, right there. But I think more Italian clubs are going for Gabriel Jesus, by the way. Napoli have made contact already. So I think that deal is happening as well. But nothing is happening for United. So honestly, I've become completely dead to it, man. I've accepted the fact. It's not even that. It's I just don't trust anything Ineos says. It's a very simple as that. Without going into detail again and again and again. Yeah. I just simply don't trust them. And if people trust them, good for them. Yeah, I'm not here to tell people what to do, but I don't trust them, man. They have given us many a clue throughout the last 2 years in their interviews. Yeah. That and they have done the opposite. I'm still asking you. Very simple. When Omar Berrada was signed, he said he promised us a marquee signing. Yeah. Where is the marquee signing? There's been no marquee signing. This is about to be the second complete transfer window he's in charge of. Where is the marquee signing? There's no marquee signing.
So then why say it to Nina? Because at the end of the day, people are going to remember you saying it. Yeah. So why say it? Where is the best? The exact words is best in class. No, So no. where is Best the in class. Best in class was we are going to buy all our players that are best in class, which is Yeah. fine. He was talking about we are going to get a marquee signing, which was going to blow our minds. Yeah. Where is this said marquee signing? There is no. And Divyansh is It is asking no. who would be your CDM target now. My personal view is Chima Anders. See, Chima Anders may be a great player, a great potential, but chat understand the need of the hour. We did not finish 8th or 10th that we are in transition phase. We finished 3rd, only 14 points behind the league leaders. Okay, scored more than 65 goals in the season. We have to secure another Champions League spot, not be in the league. You know, we're not Spurs. They can be desperate. They have every right to be desperate. Right now, for us, if you're thinking that Chima Anders is a great option, yes, but who is the senior figure to mentor Chima Anders in that 6 role, in that 8 role? Tielemans, enough experience, I think, has played. Tielemans has played, I think, close to 350 Premier League games, by the way. He's going to no, I think it's 250. I think he's 6 short of 250. Yeah, 250 Premier League, 350 because overall. Because I saw Shashi's short. I think it's like 244 or something like that. Yeah. So as long as he's a great player, I don't agree. I agree. But right now we need a player who will mentor them. Oh my exactly. God, help me. No, not even mentor. It's just like get integrated right away in the team. Like Kune and Mbumo came in straight away, just started performing. That's what I want. That's what I want. Atif, we were interested in Martin Ullman as well as Usman Diomande when Amram came in first. We wanted Quenda first, but Quenda didn't want to play left wing back anymore. Which is kind of funny because now they've got Xabi Alonso and they are mostly playing a back three now. Last couple of games they've kind of played a back three. So I don't know how they're going to use Quenda now, but it's kind of funny because he didn't want to play under Amarim and now he might have to play it anyway. But that was his first choice. He wanted Giovanni Quenda and then Diamande and Ullman were the other two we were. And everyone said we are going to have to pay 60 and 80 respectively. And then 1 year later, they both go for nowhere near those prices to Atletico Madrid and Nottingham Forest. So Daksh is here saying plug and play. Like, bro, this fellow's getting very saucy on the internet. Huh? Yeah, he's cooking on Twitter. You're getting very saucy on the internet after this transfer. I like it. Good to see you, Daksh, on the chat. I like it a lot. Yeah. People are happy with Zolis now. Now, I don't know who they're signing for left wing. Daksh, let me know what you think. I think you guys are going for Iliman Njai. Print is saying Ten Hag just spawned the Ajax team right away. I guess if you can't cry, you can laugh. No, this is the perfect example of that. Really, Quenda also joined actually. See Chelsea. So Chelsea. No, but Matt, my point is that he didn't want to play wing back, so that's why he didn't come with Amarim. I mean, allegedly that is the reasoning. Nathan, one more hear me out. You're gonna see one more hear me out and hear me out. Okay, hear me out. I'm gonna show another hear me out. Oh God, who? Yeah, boy, let's go. Let's go. I mean, I know you. Let's go. Look at this. Across the last 3 seasons, only 7 players have scored more Premier League goals than Jared Bowen, while his 25 assists were only bettered by Mohamed Salah. Look at this. The goal involvement by Jared Bowen. Heritage, dude. Heritage signing. Premier League heritage, dosto. He is still in the championship. Man. This, for me, if people are talking about Watkins, people are talking about Welbeck, this to me is a no-brainer. For me, this is the ultimate no-brainer. A guy who has actually performed season after season in the Premier League. Oh my God. If Carrick is preferring Mbumo as striker, Jared Bowen has actually played striker. So,
Chat, you What's let me know what you happening, bro? think. Now we are literally buying championship players. It's crazy now. Yeah. What about this? I tell you, it's really gone downhill in the last 2 weeks, man. Really. If this is not an example of it going downhill, no, I don't know what is. Daksh is saying Rather I would get a rather get a defender for defender than Kundi. Krupi in Jan. You guys are going for Kunde. Daksh, you know How what? many I had more actually defenders said you this in want, bro? no. There's a context to it. I actually in January had mentioned this on one of my streams that if Barca are desperate to sell players, Kunde might be one of the sellable assets. And I had said this: if Ben White is getting injured and Timber could get injured a lot as well, I think Kunde fits the billing in Arsenal. And if this is happening, this is gonna work. I'm telling you, this is gonna work. Arey, see, Lala is not paying attention. Lala is only coming here to chat. He's saying, "Why, Nathan? You were a Bowen fan." I said I would take him, but at the end of the day, it I'm doesn't a change Bowen the fan. fact that these people are not our primary choices, which is the point of this discussion. But yeah, I actually wouldn't mind Jared Bowen as an alternate striker to Sheshko. Yes. No, Oh, that's a but great he's one. crap. That's true. Is that true? Which He one? signed a new contract at West Ham and also has some stakes in West Ham. It's over. Fuck. That's not happening. Fuck. What they gave? You Bowen think signed they a gave him contract. shares, bro? You think they gave him shares? Wow. Jared Bowen actually What kind made a of new masterclass ownership? deal. What kind of new ownership process is this, dude? Where they start giving people stakes in their own club? Bowen signed a contract. Yeah. Bowen signed a contract. He Yes, actually Fabrizio, reminded July me. 17th. Yes. He signed He a has revised signed a contract at the club and man. decision to I just continue. remembered. That's Wow. true. He has signed a contract. He signed a contract. But normally they have this. What is it? What is it? The relegation clause. Relegation right? clause, right? Yeah. Yeah. He's staying. Yeah, actually. He's staying, man. He's saying it. He's going to come up with them, yeah? And he's probably going to retire. West Ham is them. going to come up. I think they're still keeping. But by the way, they're letting go of El Hadji Malik Diouf, which apparently our fan base wanted him by left back. He's shit defensively. When you say they're letting him go, means what? His contract's over. He's only 22, right? No, he's Brentford is signing El Hadji Malik Diouf. 30 odd million. Brentford. So Brentford has Diouf and Coyote on either flanks. Okay. And they've got Mamadou Sangare, who's gonna play with Damsgaard. And man, this season's going to be a long one, bro. And they have Kevin Schade. This season's going to be a long one. Bro, I'm just going to be a long season. No, he's mostly a right wing, but he can actually play a backup striker. He has actually played striker a lot. Modern football, Snail. Modern football, Snail. Modern football, bro. Bowen signed, yes. We're putting them everywhere, dude. Yeah. All the players are playing everywhere. Bro, Chelsea have actually signed. You paint a starter. Oh, I think he is going to start at Brentford, though. Who was the Brentford left back? I can't remember right now. Brentford left back was this guy. Who's Brentford's left back? How are we drawing a blank now after watching the whole season? He was injured last season and then he came back. No, it's not him. They got a replacement for him. I know you're talking about Rico Henry. Rico Henry's not played the majority of the last 2 seasons. He's had a very bad. Keane Lewis Potter sometimes fills that role. Keane Lewis Potter, Keane Lewis Potter sometimes fills that role. He's actually not that bad either, man. Not that bad, yeah. Chelsea, I'm telling you, Shavaria, I'm actually seeing he's actually has the biggest carries in La Liga among all fullbacks, by the way. So Chelsea have signed a very good fullback, by the way. We got to give some shares to Bruno. Hey, this is a great point, best player. This is good. I like this, bro. This is perfect, bro. Knowing these, I wouldn't be surprised if these owners actually do it. They're this desperate to hold on to their PR. No, they might actually do it. Do it. This is great. I like this. Munoz linked to Spurs, by the way. Why Munoz? So they're gonna have Pedro Porro our club's not serious, man. I don't know how much proof people need. Our club's not serious. Munoz linked to Spurs. Let me check. Munoz. Yeah, he's right. Yeah, he's right. I've seen something on Munoz. Means there is no offers. There's no amount, but 20 million. 20. What? 20. He is 30, but right. But still 20. I mean, he has run the most distances across the last 2 seasons, bro. Like he had a but the problem is he might not want to extend, so they're trying to get whatever they can. Yeah, I think it's just 1 year left on his contract. I think after this,
Oliver Glasner. See, I think Nottingham is also looking at Munoz. Nottingham is also looking at Munoz. Balogun's going to go to Spurs after being an Arsenal player? Really? Yeah, Balogun is. Spurs are going for Balogun. Spurs are going for Balogun. So Spurs. Yeah, so wait. Spurs have got. They are actually going to go buy an Arsenal player? Sol Campbell memories. I mean, you can't say they're not. You can't say they're not ambitious, right? Yeah. They are actually. Can't say they're. I'll watch along. I don't know, Nathan, if you're doing the watch along for the Leeds game. Mostly, I'm not I doing. don't know, man. I'm not Mostly, doing. I have nothing's planned right now. But nothing planned for me, but I'm not doing. I'm just gonna. I'm still recovering, guys. If you don't remember, I'm still recovering. I'm able to move my mouse with my fingers. That's the best part. Bro. So at least Crazy, I'm able to do that. So that's the crazy part. Darshan is saying if Kunde goes, can Barca Coyote? Coyote signed. It signed a new agreement. New have agreement. to spend a lot of money, bro. I'm telling you right now, you're going to have to spend exorbitant amounts to get people out of Brentford. Just exactly. Watch. Brentford, Kevin Schade, if any German clubs go for him, Kevin Schade was costly 60 million at least. Kevin Schade Yeah, was Dortmund, no? Dortmund was looking for him. Dortmund was looking for Kevin Schade, yes. Yeah. I'm Because telling you, Dortmund Nathan, you let got go to finish of, 17 so Man United can spend some big bucks. It all makes sense for Dortmund, right? Because Dortmund let go of Karim Adeyemi to Barca. So they're looking for the similar profile. Kevin Schade, German again. By the way, Astro, Chelsea joined the race for Lamine Camara. Chelsea for Lamine Camara. What are you saying? United to win for Lamine Camara, no? I know Crystal Palace is won't the only club overpay who's even making if the consequence is that our squad is very thin. But Chiranjeev, let's ask a simple question then. Don't you think we have overpaid for Santos? Chelsea has joined because they know. But you don't. But you don't think we have overpaid for Santos then? Like Chiranjeev was saying, we won't overpay even if the consequence is that squad is very thin. So then, what was the benefit of finishing in Champions League spots? Because I'm sure we could have spent the same money without damaging any Arsenal of going for our pockets. Bomba. Yeah, there's a Bomba. They're linked. Sammy Mockbell Bomba. Oh, Sammy Mockbell. Wasn't Spence supposed to join Liverpool? Why is when this Inter move happened? Maybe Liverpool pulled out, dude. Who knows? But it is here we go for Inter. For sure, Arsenal to reignite interest in Aston Villa defender Ezri Konsa has actively explored move for Tottenham defender. They're signing even more defenders. I think Saliba is going to be out of most of the season, so I think they're getting a. But they already have, but then they don't have Tomiyasu as well, right? Look, Forest is looking at Tijani actually. Yeah, because they lost out. What 35 million? 35 million? Yeah, they're looking at. Where did the Stiller stonks go? Nothing happening with Stiller. By the way. Prince, see, this is the thing, right? At the end of the day, where did all our links go? Hey Anshuman, what's up, buddy? Where did all our links go, bro? All our links did. I'm telling you the chronology of all the links. Why are we only stopping at Stiller? All our links didn't go, bro. Let the fun begin. I'm telling you, since I've been covering the transfer window very closely, like bit by bit. So I'll tell you, okay. So it started from Elliot Anderson, Tonali, Matthews, Tyler Adams, Sanderberg, Anders Chima, Stiller. Now it's Lamine Camara. Right? I'm starting to get the feeling we're not looking for a midfielder anymore. I'm telling you, Lewis Page is the third signing. Carabao Cup, we will see Lewis Page and it's embarrassing. It's really embarrassing. People are saying we are doing this. Jim Ratcliffe said we are going to get the next Mbappe. I'm like, based on what fucking theory, man? Yeah. What, you can't just say stuff and just I don't just explain something to me, right? How can someone just say things and then everyone goes, oh, he said a banger, dude. Now it's going to happen. Like, bro, okay, hold on. Check this out, okay? Okay. If I invest in my fitness today from today onwards, I am going to get a Victoria's Secret model as a wife. Bro, like, what is this, man? Like, this is really stupid. Like, oh my god, he's going to buy the next Mbappe, so we'll get 10 years cup player. I'll give you another one, Nathan. I'll give you another one. If my grandmother had wheels, she would have been a bike. Bro, like,
I mean, it's Yes, crazy. Alex Scott. He's sitting. Yes, we forgot Alex Scott. He's sitting there with his legs crossed, going, instead of trying to buy Kylian Mbappe, we're going to make the next Kylian Mbappe. I'm like, to make the next Kylian Mbappe, no. First of all, you need to give them minutes. And his manager signing gave how many next Kylian Mbappe minutes last season when we finished 15? Before we finished 15, when we finished 8th, excuses were, man, we're almost getting relegated. We can't give youngsters. Then when he got the next full season and when we were languishing in 8th and lost to Grimsby, we never played players then. So when are we going to get these players? Exactly. You have to start playing these youngsters. Raghav, I mean, your academy is boiling out. He's saying someone might come big this year. Shea Lacey, Aiden Evan look good already. But Raghav, this is still not investing. He's saying, I want to invest in the next Kylian Mbappe. These people have been here before he was here. Shea Lacey has been in Manchester United before Jim Ratcliffe. Fab Bomba. Joe Palhinha has agreed. Agreed to go where? Aston Villa. So Aston Villa have Joao Gomez, Manzambi, and Joe Palhinha. Because they had who injured? Parag was saying you already have Rashi. Bro, he's also been here before Jim Ratcliffe. All these players you're naming have actually been here before this man wants to buy future talent. All these players are already here before he came. Modi does that. Bro. Leave it there. Let's talk about football, please. Do you think Arrow to Liverpool is good one? Let the Liverpool fans answer this. I think that we should leave that up to them. No? We should leave. I'm not going to answer that question, honestly, because all Barcelona fans are laughing on this. Nathan might have more chance with Victoria's Secret model. I'm telling you, dude. If the criteria is sitting cross legs in a suit and saying something, this man is going to win an Oscar award, dude. Because everyone's like, wow, you heard what he said, right? He also compared us to Fulham, and he also told us we are going to get best in class. None of these three things have happened, by the way. But you know what? We'll wait for 10 more years. So we can go 2 billion into debt instead of 1. Let's do that. We can't even lock in a Sanderberg. Already Aston Villa. By the way, chat, I'm just trying to remind you once again. Aston Villa finished 4th last season. Aston Villa played Champions League the previous season. Okay? Aston Villa are our closest rivals with a manager who has been taking them to Champions League season after season and won them a Europa League already. Conference League. Sorry, not Europa League. He has a better chance of finishing higher than us because they've invested in the squad. Someone is saying hijack incoming for United. Hijacking who? But who hijack? Hijacking. I want to know who we are hijacking. Atletico Madrid have closed the door on Barca for Julian Alvarez. This saga is just hilarious, man. This Julian Alvarez saga has been hilarious. Hijack coming for United. Who? Which hijack? Sign me up. You mean hijacking Lamine Camara from Crystal Palace? Who the F is Pedro Fulana SCR? Santra, let's be honest. All these ITKs have nice names, so you never know. Oh, ITKs, yeah. There's so many ITKs right now. By the way, over 200 people watching consistently since 2 hours. So that's great. Please make sure to like the stream, and please subscribe to Nathan. Please subscribe to Dhruv. Please subscribe to Midwicket Manager. I've tagged all the channels on the title, guys. Please do give them a subscribe as well. And please like the stream. But leader, someone just said that Barcelona in for Georges Mikotadze. I think that's a very good deal. I mean, if it's done. Santos Tielemans are all nowhere bombas. All links are pointless because these were just opportunistic signings. I mean, listen, man. That's why you didn't hear any. I'm honestly telling you, the crash out this year for United fans is going to be legendary. Honestly, because the narrative of not finishing in Europe to buy players and then doing really well under Carrick and buy nobody. My God, if we finish outside of Europe in 2027, the crash out is going to be like you have never seen before, bro. It's going to get really crazy. Yeah, and then it really will be. And then people will come to our streams and say, Ash and Nathan, we told you guys are negative around that situation. See, it's not about being negative. It's not about negative. It's stating facts. We're just trying to see
See, I'm just going to say something to the young fans who might not know. Remember, right? I'm just going to say that you can either call it out in real time, or you can display what people call patience and positivity and do it when it's too late. The same Glazers we complain about now, there was a group of fans, and I only know this because I've been told this and I've heard this from many in many interviews, that when the Glazers bought our club on debt, straight away there were people who were against it and left the club and started a club of their own, which we discussed earlier, FC United of Manchester. That is literally born out of the fact, that people were not happy with the way Manchester United was being treated. You wanna read something else? No, 1 minute. Let me just finish this. I mean, put it up. Of course, put it up. But the other thing you need to know is that the same things you all complain about the Glazers 18 years later after ownership and being in debt. There was a certain fan base that objected and no one believed them because they all wanted to be positive, and now they curse the Glazers. You have the option of calling it out in real time and seeing how it goes, or risk waiting 10 years and being even in more debt and then cursing them. For me personally, moving forward, I like to go in real time. People were preaching patience in the transfer window. We have done nothing. How long are you going to be patient till 1st September? Good luck with that. But notice that even last year when we got the signings we all liked, we took almost a month each for every signing. We are mourning about Mbumo 1 month signing. Remember? We don't even have a month left total. So I don't know where these signings are going to come from, if they come. But I would prefer to, as people like to call, mourning or complaining about it in real time. I don't want to complain about how bad a club is 10 years later. It's too little too late. So you have the option of doing it now or doing it when it doesn't matter at all. Because unfortunately, those people that started that new club were right. But today, 18 years later, everyone is cursing the Glazers. Majority. This is exactly what I've tweeted this. This was Luca Black, by the way. He's the third midfielder. Come on, man. Bro, I can't lie though. I'd play him. If you haven't read this article, do read it. It's an open letter of resignation from the This is the what president of the fans forum, some elder guy, right? Yeah, Luca Black. He was like a young guy, right? He was there as part of that fan conversation that happens between the clubs. And he has written an open letter, guys. I'll paste the link of this tweet, or you can go put follow it in the me link, man. Let people read it. Let people read it. Let them come to their own conclusion. Because people always say we might not have all the information, this, that, and the other. No, let someone who's in the fans forum, he is being spoken to by the shareholders, all that. Let he has heard things we have not heard. Exactly. Let people read it and come to their own conclusion. It's so much better go read this open letter of resignations. You can see there's a clear disconnect between I've summarized it up, but you can go and read it. By the way, there was a disconnect all the time, because whenever we would whenever the fans forum would assemble there to ask them about transfers, they would talk about how much profit they'd make. This is like before even before Ineos came here. After Ineos came in, when people would ask about transfers and what's going to happen to the club, they would either tell them they don't have any plans yet, or they haven't figured it out yet, and they would talk about how much profit they're turning over. When people would want to know what's happening on the football side of things. And also the fans forum keep on complaining about some of the ticket prices for at least the youth there. That those conversations have stopped since Ineos. You go and read the letter, guys. It's a stark reality of what Ineos stands for this club, and how the relationship between the fan forum and the club has degraded over the years. It has worsened down the years. Go read it. That's a stark reality where they have had meetings with Omar Berrada where they have been promised certain things and then they are ignored in those meetings, their conversations. Go read it. It's a reality that will just open up your eyes. It is what it is, man. Param is like, Nathan looks so excited for next season. But Param, I'm always excited to watch my team play, but that does not change the fact that it's the transfer market in and of itself is disappointing.
For example, Param, if Bruno scores an opening day hat-trick, I'm going to be excited about it, but it won't change the fact that we have not been fully prepared for the upcoming season. I can separate the two facts. Yeah? I am very excited, but it's very easy to be excited for game 1 of the Premier League. When it's game 45 of the season and everybody's tired and some people could be injured. That's when you're going to find out how stressful the season is going to be. In game 1, everybody's fit. We're all moving. Everyone's 100%. enjoying life. Moving forward, it's going to be tougher. And I'm going to make a statement now, guys. If you want to clip it or not, I don't know. If we do not make one more midfield signing and a left back signing, we'll be gassed out by December. I don't know how people think we are going to finish top 4 bare minimum when everyone has made so many signings. We'll be gassed out by December, Nathan. I love the confidence. I love the positivity, but I'm very worried with everybody moving so crazy. If we do not even sign, let alone primary marquee potential, if we don't sign players by August 31st, if we don't get a striker backup, if we don't get a left back, if we don't get a CDM, I'm sorry. I have to go, Ash. Sorry. Yeah, me. I just before you go, I want to read this. I want to give people trauma before I leave. Major breaking news: Roberto Martinez has emerged as a surprise candidate to become the new manager of the Netherlands. See you guys later. Do like, share, subscribe, guys. Take care and enjoy the rest of your evening. See you. I mean, a team that already has no international trophies, they're about to get -1, bro. Fuck, it's brilliant. FAs are still hiring this. Sorry, they won the Nations League, I guess. No, whatever. But then never mind. They won. I mean, I think they won the Euros even. I think good for them, man. It's about to. Don't worry, World Cup incoming in 4 years' time, bro. How does he get away with this? National team. What are you talking about? He's a world-class manager, Matt. No, he won the FA Cup in 2000. Wigan Athletic. Wigan. See you guys. Take care. See you, Nathan. See you. See you. Oh god, this was a fun stream, guys. This was a complete fantastic rant session tonight. Guys, 163 people watching right now. Please have you liked the stream, and if you have not liked the stream, have you subscribed to the channel? If you're not, please hit the subscribe button, because we are on 3129 subscribers. We need to be on 3300 right now. Please hit the subscribe button if you're new to the channel. And Snail is saying, if you agree we are thin, even Liverpool is thin and us not lesser. I don't care about Liverpool. I only care about how we gonna do. I'm worried whether our players can sustain 3 high intensity minutes in every 3 or 4 days, because we are very poor in managing injuries, and that's the reality. And that's the point that is worrying me right now, that if we don't make signings by 31st August, we'll be gassed out by December, and we are fucked, guys. We are fucked after that. And then everyone, if they come and tell me on the chat that Carrick needs to be sacked, then I'm going to show you the transfer window of Ineos, guys. Right? So please like the stream if you have joined. I'm going to stream tomorrow or Friday. And then weekend, obviously, we'll do so I'm not doing the watch along tonight, guys, for the Leeds game. But Saturday, I'm going to do the United versus AC Milan, Carrick versus Amorim watch along, and we'll meet you there. But I think I'm gonna stream either tomorrow or Friday. So stay tuned. And thanks so much, guys, for all the wishes and all the messages that you gave me for my recovery. Thank you so much. Appreciate all the love. And please subscribe to the channel. Yaar, how kitna subscribers हुए मेरे को बताओ. Right now we are in 3130. Come on, yaar. Only one subscriber out of like so many people today. Please hit the subscribe button and please like the stream. I'm thinking of supporting one club besides United. Never seen United winning Champions League or EPL. Born in 2006, Barca. You're born in 2006, but we won the Champions League in 2008. Which should I choose? Bro, choose Barcelona. They're playing some beautiful football, man. You will have a lot of fun watching them. I hope we get so many chances in life like Baldy Martinez. Why sahi mein, like seriously, man. Seriously. I will not watch today's match. I will watch today's match, and I'll really enjoy the match, basically. See you guys on the next stream. Bye everyone. And it was a fantastic stream, by the way. Hope you guys liked the stream. It was a good rant session. And we had Shashi, we had Dhruv, we had Nathan as well. We'll do more streams just like that. And the Devil's Den second episode is going to be back.
Very, very soon, we're going to do that. And I'm thinking of doing a Liverpool and Arsenal preview with Lala, with Daksh. So very soon you will see those streams as well. And yeah, absolutely. See you guys on the next one. And bye, everyone.